You manufacture in your country. I will not put any tariffs, and you can supply. You can sell the product in India. So then, how will Indian people get jobs, right? Because for markets like UK and Europe and Australia, they don't have any more growth. They want growth. You are offering India's growth on a free platter using a free trade agreement. It is stupidity. And we know why Australia and India made a free trade agreement, because 80% of India's imports from Australia is coal. And you know who has the coal mine in Australia? Which company has? So the import duty on coal was reduced. Now, when the import duty on coal is reduced, India loses tax income on import duty. So why should we lose tax income? A lot of people don't realize that, but India is losing $2 billion of tax income because of the free trade agreement with Australia, while Australia is only losing $500 million. So we are actually losing more income using the free trade agreement. And then Australian guys will come and sell the dairy products, they will sell their wines, they will sell various other products. So, just thought I'll highlight this. As far as Adani is concerned, Fact, it's a very good information you are sharing. One thing I would like to ask you: did you hear anything from on Vedanta and Foxconn having issues recently? And that's the pattern which you talked about, the Vedanta. And like a four big players should be involved if you are bringing the any project. That same case happened when Maharashtra government went to the Davos. They signed a MOU with three companies, and they are located in a Vidarbha. And all these three companies, the people CEO of these three companies are Indians, but they are pretending the companies listed in the US and some part of the Europe. But the CEOs are Indian. One of them is I know very closely. And what they're doing, they're signing the contracts with the governments for a 30,000 crores, 40,000 crore, with like their market, their capital is a less than 1 crore, and they're signing the 30,000 crores agreements. And what they're doing, what you're very well explained, that they're going to the foreign companies and signing the, showing this, we have a MOU with the government, would you like to like a partner with us? And that's what, like a, I don't think Vedanta even has any market capital, and they're like they're showing uh, like themselves pretending they are the bigger player, but and they're doing the agreements with the Foxconn. Would you like to talk about that, like what they're doing? Can I, you, I don't mind talking about it, but do you guys want to discuss it in the first place? good, good. That was good information you were saying. So anyway, let me just quickly just talk about Adani, since everybody is obviously really interested in understanding the stock market. What Adani has done, obviously, now with this Adani FPO, is that they have got one of the funny, very strange companies coming in and putting in a $400 million bid. And I'm told that there will be two other such companies will come. So the total FPO will happen. And if the FPO happens, that kind of, it'll be like a release valve on the market, right? Because the market is very concerned about this capital raising. But this is all temporary. This is all temporary. See, the problem is the Hindenburg report is not going to go away soon. And the reason people need to understand is that the Hindenburg report has made one very strong accusation, which is that they're saying that the FPIs, which Adani has invested in Adani, are nothing but uh, associates of Adani family. Now, the index providers like MSCI and FTSE, what they do, and this is very important, okay? What LIC did was to buy the stock so that it goes up and it gets included in the MSCI and ETF. See, all of you must be knowing now that ETFs is a very big part of the flow in the market, right? And ETFs don't bother about valuations. They just, if it is a part of the index, they buy the stock. And every month, your EPFO money goes to buy the ETF. And if there is any money by foreign investors into the MSCI or the FTSE ETF, it goes and buys the stock. They don't care about valuations. Only a mutual fund manager who has a active fund, they care about valuations. So, in case of with see the what MSCI looks at, there's something called effective free float, effective foreign free float. Now,
फैक्ट फाइंडर 1 मिनट, जस्ट वन। रिजवान भाई, अगर जो भी फैक्ट फाइंडर बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बोल रहे हैं और एक्चुअली बहुत सरल में बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो अगर इसका अनुवाद आप में से कोई उनके होने के बाद हिंदी में करे तो आप ये ही जो करना, बोल रहे हैं आप ये ज्यादा सब बेहतर नहीं। करोगे, अरे आप मैं ज्यादा हिंदी बेहतर में, करोगे। अरे देखो यार, आप लोग करो इसलिए क्योंकि ये स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी नहीं तो गजा भाव करेगा। तो ये जो बोल रहे हैं क्योंकि सबको समझने की बहुत जरूरत है, बिकॉज फैक्ट फाइंडर इज मेकिंग सम रियली वैलिड पॉइंट। तो कोई प्लीज, डॉक्टर चौहान भी कर सकते हैं शायद। गजा भाऊ आप कर देना हिंदी में, गजा भाऊ। I'll अरे try. गजा I'll try. भाऊ, I'm listening. ठीक है। हाँ गजा भाऊ चिराग एक सेकंड, सचिन भाऊ एक सेकंड, फैक्ट फाइंडर भाई ही बोल देंगे हिंदी में, कोई इशू नहीं है। फैक्ट फाइंडर के बाद चिराग भाई भी बोलेंगे, ठीक है जी। फैक्ट फाइंडर। Yeah, I can't speak Hindi very well, so sorry, forgive me. Somebody else will have to speak in Hindi. Okay. Okay. But I'm sure Kayan understands what I'm saying, so I think he can speak. After I've spoken. So let me just put it this way: that the MSCI, what they consider something called effective foreign free float. What is effective foreign free float? For instance, suppose you take a company, 75% is owned by promoter, 10% is owned by a foreign private equity, and another 5% is owned by a strategic investor. Now, the way Nifty will look at it, the NSE will look at it, they will say 75% is promoter means 25% is float. Finished. Very simple. What MSCI will say, listen, 75% is promoter, but 5% is a foreign strategic investor, and another 10% is a private equity. So I will remove that 5%, 10%, and 75%, which is 90%, and only 10% is float. Because they say that foreigners can only buy the 10%, because the remaining 10%, the first 10% was owned by some private equity, that is strategic. The second 5% was owned by some VC, that is also strategic and foreign. So what is remaining is only 10%. So we will only consider 10%. Now the thing is, in case of Adani, all the Adani stocks, they have considered promoters hold 75%, remaining 25% is float. But if these guys, if they take, they will consider the feedback from this report by Hindenburg, and Hindenburg is saying that no, all those foreign investors are nothing but a group. They are related to Adani. If MSCI accepts this, and they will take some time to accept it, and they will take feedback from institutional investors, and all institutional investors want Adani stocks out of the index. Okay, because nobody can understand those stocks, nobody can understand the valuations, nobody can understand the group. So they will give that feedback and saying that, listen, Hindenburg is showing you proof that these are related, and we agree to what they are saying, but we didn't want to say it. Now that somebody's come out and said it in the report, we agree with that. So then MSCI will take a decision. They could take a decision of removing it entirely. If this happens, MSCI removes it, FTSE also will remove it. FTSE is Vanguard. If MSCI and FTSE both remove it, then suddenly there will be pressure on NSE also, and saying, okay, foreign institutions, independent institutions are removing it worldwide. So MSCI is a worldwide index provider, the largest in the world. They are removing it. Then, and because they are saying that the promoter holding is this much, then suddenly NSE might be forced to implement the same. If they do that, all those Adani stocks will be, except for Adani ports, all the other Adani stocks will be removed from the Nifty also. If that happens, no, finished. Finished for the Adani group. Because the stocks will all fall 60-70%. Because there's no value in those companies. So you want to explain, Kayan? ओके ओके, गजा भाव समझा रहे तो अच्छा है, क्योंकि आई एम वेटिंग ऑन ओके नाउ। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आप, अगर आपका कोई बिजनेस हो और आपके बिजनेस को बैंक लोन लेना हो, तो बैंक बोलेगा भाई आपके ऑर्डर बुक बता। तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट फाइंडर भाई को बोलूँगा, भाई तू मेरे को चालान भेज कि तू मेरे जो भी मेरी बिजनेस है वहाँ से 50 लाख का ऑर्डर लेगा।
गजा भाव को बोलूंगा तुम 50 लाख, रिजवान भाई, सचिन भाई, सबको। तो आप यहाँ पे जितने स्पेस में सब ऑर्डर मैंने कोई एग्जीक्यूट किया नहीं है, लेकिन बुक पे ऑर्डर दिख रहा है कुछ 50 करोड़ का भी। तो बैंक उसके आधार पे मुझे लोन देगा जो भी 70% है, तो 35 करोड़। अब तो ये मोटा मोटी में जो बताया, ये अडानी को रिलेट, मेरा बिजनेस समझो अडानी है। तो ये मार्केट में लिस्ट होने के लिए कोई यानी स्टॉक को इंडेक्स में लिस्ट करने के लिए ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर इसमें आपके स्टॉक्स को इंक्लूड करना है तो ये पैरामीटर्स होते हैं कि भाई आप ये सब इंस्टीट्यूशंस, ये सब। तो ये अडानी जी ने क्या किया, इन्होंने बाहर इंडिया के बाहर ये सब सेटअप करके, ये जैसे अब तक सब लोग जान रहे हैं, उनकी ऐसे बताया कि भाई 10% होल्डिंग इनका है, ये फंड का है, 10% इसका है। ये करके वो इंडेक्स में आ गए, क्योंकि इंडेक्स में आना बहुत ज़रूरी है, तभी लिक्विडिटी जो उनके जो लिक्विडिटी साइकिल में वो आ जाते हैं। तो अभी ये खुलासा से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाला है, क्योंकि अभी क्लियर हो गया है कि भाई ये जितने इन्वेस्टमेंट 75 के ऊपर, क्योंकि 75 तो अडानी ने बताया कि खुद के प्रमोटर के, बाकी के 25 के जो 25 का जो झोल है वो पता चल गया है कि भाई इनके ही स्पेसेस में से सब लोगों ने इन्वेस्ट किया। ये एक्चुअली अडानी का ही पैसा है, अलग अलग नाम से अडानी का पैसा है। तो एक्चुअली देखो तो 95 to 100% अडानी वो कंपनी इज ओन्ड बाय अडानी, लेकिन ट्रेड ईटीएफ पे आने के लिए ये सब गेम किया। ये खुलासा हो गया है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की वजह से। तो फैक्ट फाइंडर भाई ये कह रहे हैं इसका उस पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। मैंने असर हो जाएगा क्योंकि इनके एक या दो कंपनी छोड़ के मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन भी शायद बच जाएगा। इनका जो भी ईटीएफ में इंक्लूडेड में से एक पोर्ट तो रह ही जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो फंडामेंटली थोड़ा बेटर कंपनी है। लेकिन वो छोड़ के बाकी सारी कंपनियां 70-80%, 60-70, सॉरी उन्होंने 60-70, लेकिन मेरे हिसाब से 70-80% घसरेगी। जो मैंने अनुमान लगाया उसमें 70 to 80% घसरेगी और उभरेगी भी नहीं, शायद डिवॉल्व भी हो जाएगी। तो ये सो फैक्ट फाइंडर, डिड आई समराइज इट प्रॉपर्ली? Yeah, kind of, but that's okay. I mean, I think it's a अरे very यार, क्योंकि अगर मैं पूरे हाँ बराबर है, मैं पूरे डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर मैं भी इंग्लिश में चला जाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो मोटा मोटी यही है कि अडानी ने जो ईटीएफ में आने के लिए, यानी हमारी बिल्डिंग में घर खरीदने के लिए उन्होंने झूठे सब बताया कि मैं जैन हूँ। एग्जाम्पल मैं सिंपल कर रहा हूँ, इतना सिंपल कर रहा हूँ ताकि जो फाइनेंस समझ से नहीं, जो ये पूरा गेम समझ से नहीं। जैसे समझो बॉम्बे में बहुत बिल्डिंग है ओनली जैन अलाउड, तो मैं अपना सरनेम ही जैन कर देता हूँ। मेरा जो सरनेम है कामत से मैं कर दूंगा जैन, मैं कर दूंगा केएन जैन। तो बिल्डिंग वाले, अरे मैं तो जैन हूँ, मेरी बीवी जैन है, हम मांस मच्छी नहीं खाते, कुछ नहीं, तो हमको बिल्डिंग में एंट्री मिल गई। तो ये अडानी ने किया है अपने आप को, यानी स्टॉक मार्केट का जैन आदमी बता के अंदर ईटीएफ में अपना स्टॉक को एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन अभी पता चला, एक दिन देखा इनको किसी ने कि भाई सारवी रेस्टोरेंट बॉम्बे में कबाब तोड़ रहे, पकड़े गए, तो अभी वो बिल्डिंग में से बाहर जाने वाले। सिंपल। हाँ चिराग भाई। चिराग भाई हाँ बोलो। जी 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 मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। अभी अभी जो फैक्ट फाइंडर ने बोला उस पर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। बस यही है कि आप इसको कितना भी एनालाइज कर लो, कहाँ से कितना पैसा फॉरेन से आया, यहाँ पे कितना परसेंटेज दूसरी कंपनी ने लगाया, कितना प्राइवेट इक्विटी फंड्स आया, कितना, ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जाएगा। और जानबूझ के ये लोग ऐसा करते हैं ताकि जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो कंफ्यूज रहे हमेशा। इसीलिए इसका 100 बात की एक बात अगर मैं बोलना चाहूंगा ना, किसी को भी अगर इस चीज को थोड़ा एक अलग नजरिए से देखना है, तो सिंपल सी बात है, अदानी को अगर इतना ही भरोसा है अपनी कंपनियों पे, तो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दे कि आई विल इंजेक्ट माय ओन फंड्स एंड आई विल डू शेयर बायबैक। बस खत्म। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। गूगल ने भी किया था पिछले साल, जब उनको लगा कि उनका स्टॉक प्राइस काफी अंडर वैल्यूड है, उन लोगों ने शेयर बायबैक किया था। तो सिंपल सी बात है, अगर अदानी को सच में इतना भरोसा है और उसको इतना कॉन्फिडेंस है, तो उसको अपना खुद का पैसा लगाना चाहिए कंपनी में, शेयर बायबैक करना चाहिए, तो रिवाइव हो सकता है स्टॉक। वरना और वो ये कभी नहीं करेगा। मैं लिख के दे देता हूँ, वो ये कभी नहीं करेगा। तो अगर आप में से किसी को भी
इस पे आगे इन्वेस्ट करना है, तो दैट शुड बी योर बेंचमार्क. इफ ही इज नॉट बाइंग बैक हिज स्टॉक्स, देन डू नॉट एंटर. 1 minute, Ken, चिराग रिस्की, Ken. सॉरी चिराग, रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज जो भी बायबैक वो कर सकता है. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज बैंक से पैसे, आपके पैसे लेके बैंक से वो बायबैक करेगा. तो ये प्रपोजल बहुत रिस्की है. कोई सुन रहा है, उसको ये आइडिया दे रहा है, तो हम फंस जाएंगे. कि फॉर हिम बाइंग बैक विल, if buying back alone proves his merit worthiness, it's very easy for him in the current environment to get money. लेवरेज करो आप. बायबैक अडानी करेगा, वो पैसे बैंक से होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. स्टैंडर्ड यहाँ पे इंडियन ट्रेड नोट्स क्या, या इंडियन गवर्नमेंट गारंटी ओके, करके ओके. भले इंडियन. हाँ, तो बायबैक का ऑप्शन ये डिस्कस भी मत करो कि मेरे कोई भी किसी के लिए भी, अगर विद सच अ कॉन्टैक्ट, इट्स वेरी इजी टू डू अ बायबैक एक्चुअली. On a lighter side, Ken, I'll say, One like गजब Narendra Modi ji, one thing, Modi ji. Sachin, just one thing. जी. See, Adani cannot do a buyback because he already has 75%. So his shareholding will increase, so he can't actually do a buyback, which is why he will be over a period of time forced to sell more. The issue is very simple advice. You guys hear me? Hello. जी, जी, बोलिए. These Yes, yeah, sir. these it's a simple thing that these companies are extremely expensive. And this entire MSCI issue is a huge overhang. If you are interested in these companies, just wait for that clarity rather than touching it. That's it. Okay, is my simple advice. I'm not saying buy or sell. I'm just saying just be patient. Don't you know uh, do anything. I mean, if you hold it, that's your choice. If you plan to buy it, don't you wait. Simple as that. I don't see in my personal view is that these companies, for them to be justified, have to grow at 50% for the next 25 years in order to think what's it justify value. And there is no company in the entire world who's ever in the history of the world ever grown so fast for so long. So it is impossible. So yeah, I mean, I've said it in as many words that it doesn't make sense to look at these companies and just wait for the MSCI clarity rather than. जी, जी. One small point I would like to add. Thank you for that fact finder. जब सेल ऑफ शुरू होता है ना, तो सेल ऑफ मोमेंटम 2 दिन में नहीं रुक जाता है. जनरली इट टेक्स 4 to 6 weeks. तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी लग रहा है कि अभी ये स्टॉक सेल पे है, बहुत बड़ा बड़ा सेल है, डिस्काउंटेड है, शुड वेट एटलीस्ट 4 to 6 weeks. मैं कहता हूँ हाँ, मोदी गजब. जी, मोदी जी स्कीम लेके आ जाए, नरेंद्र मोदी शेयर ट्रांसफर योजना, और जो भक्तों ने कैंपेन चलाया है ना कि बाय अडानी स्टॉक, तो हमारे जो भी कॉमन इन्वेस्टर्स है जिनके पास भी अडानी के स्टॉक्स है, फुल प्राइस में भक्तों को ट्रांसफर कीजिए. इतना ही कहूंगा ऑन अ लाइटर नोट. आशुतोष भाई कैंसिल करो, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही. ऑन अ लाइटर नोट में एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अगर कोई भी आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा ना ऐसा, मतलब अदानी को सपोर्ट करते हुए या फिर मतलब कहते हुए कि कुछ नहीं होगा, तो बस आप उनसे उनका पोर्टफोलियो मांगिए और उनके एक्सपोजर पूछिए, उनका कितना एक्सपोजर है, क्योंकि पीपल शुड Karan, if you have पुट देयर time, माइट. why don't you explain to people about the bilateral investment treaty and why companies are forced to join with these four companies. Meanwhile, I think what's it? Gajanan Guy. Fact finder, I have a question for you. हाँ, बोलो बीच में क्या ऐसे ना क्वेश्चन. बोलें, बीच में ऐसे नहीं बोलना. तो Fact क्वेश्चन finder, है लो. हाँ, MSCI removes Adani from the indexes. And what happens if Nifty does not follow suit? It's a hypothetical situation, but I'm just asking. I don't know. I mean, the point is that it'll show Nifty in bad light. Period.
that would affect all Nifty's credibility, right? Meanwhile, That I think that has one of the guys, Gajanan Gaikwad, asked me this question that that companies are going and signing big MOUs. So you're right. In fact, what's very interesting is that there is a company in Taiwan called Gogoro. I don't know how many of you have heard it. Gogoro is the largest two-wheeler EV company in Taiwan. They have 60 to 70% of market share. Now, Gogoro, about a year ago, and search on Google, Gogoro and Hero Motor Corp. Gogoro signed a MOU with Hero Motor Corp to invest in India, and everybody knows Hero Motor Corp is a very big company. They have a lot of cash in their balance sheet. In fact, I think they are a very high dividend yield company. I think about 35% of the market cap is cash. So this is a very cash rich company and very big balance sheet. Now, Gogoro is relatively smaller, but it's got very good technology. And I think if you ask me, uh, this battery swap technology for EV two wheelers is the best idea for India, because right now what is happening is that uh, you know EV if we think where to have every EV company is having different batteries, then we'll have a big environmental problem. Okay, so instead of that, if you have common batteries and everybody can swap it, then what will happen is I can, at my petrol station or the petrol bunk, I can have this entire set of batteries. Somebody can just come there, take his battery, put it in his two wheeler and go. You don't, it's like filling up petrol. You just come there, fill petrol and go. You come here, take your battery, put it there for charging, and take another battery and put it in you and go. So this is a very good thing for a country like India, and which is why Gogoro makes sense, and it's got the best technology in the world for battery swapping. Now they had a JV with Hero Motocorp. Suddenly, after Maharashtra government changed, some unknown company in Maharashtra, which has a revenue of some 150 crores, or maybe no, 300, 400 crores, a balance sheet of 100 crores, which is like 10 or 20 million dollars, they have done the JV with Gogoro, and they are saying they're going to invest $3 billion in this. How can that company invest $3 billion? Because Gogoro doesn't have that kind of money, and that other company is only 500 crores, which is what, less than $80 million of top line and $10 million of profit. How can such a company invest $2-3 billion? It doesn't make sense. So obviously it's becoming basically it is nothing but a front for politicians, and they're spoiling the entire system by doing this. I'll give you another example. This Vedanta is doing this semiconductor thing. Now they have done a JV with Foxconn. Now the problem is that the world's largest and the best semiconductor companies are Intel and TSMC. Now Intel is investing $30 billion for capex to put up fabs, semiconductor fabs. Similarly, I think this year TSMC has an outlay of $40 billion to put up fabs in US. Now they are the world's leading semiconductor companies. Why won't, if we are giving them so much of benefit, what has the government announced? This government of India has announced that 50% subsidy we will give for capex. So if somebody invests $20 billion, we will give them $10 billion free. Now and we will give them tax benefits, and we will give them land, and we'll give them water and whatever. Anybody will want to come and set up the facility. I'm sure even TSMC would want to, and Intel. Then you'll wonder, why have they not come? Shouldn't they be coming? Right? Because now you need protection in India. So you have to do JV partner. And that JV partner is Vedanta.
Now, very funny, this Vedanta company that has won this $10 billion gift called the PLI, that company is actually bankrupt. If you look at their yields on their bonds, okay, and that company is actually not an Indian company. It is a UK company. Okay, so you See, fact, one thing, they register in the UK so that, like whatever happens in India, so they will not have a liability. All the no, CEOs sir, are sir, that is Indians. not. They're not registered in UK. It is operating in UK, sir. That company is an operating company in UK. It's called Vedanta Resources. It has got outstanding bonds worth $4-5 billion. Okay, so those bonds have a yield of between 15 to as much as, at sometimes it goes up to 25%. If a company has bonds at 15 to 20%, for all practical purposes, it is a bankrupt company because you can't operate at such high US dollar yields. Now, that company you have given effectively this $10 billion along with Foxconn. Now, Foxconn in its life has only made $160 million of semiconductors a year. That's all. TSMC makes like $15 billion of or $20 billion of semiconductors a year. Foxconn makes 160 million. Nothing. They are nowhere in the world in semiconductors. So you have chosen a partner called Foxconn, which is a useless partner. They hardly spend, this semiconductor business requires you to spend a lot of billions of dollars on R&D. Foxconn doesn't have that budget. So they don't have any proper semiconductor technology. In fact, the semiconductor technology they have, they acquired by making a $160 million acquisition. So you are doing a JV with a company which doesn't have expertise in semiconductors. They got their expertise because they bought a company for $160 million, and you are giving them $10 billion of compensation with Vedanta, who has no experience. And Vedanta is not even an Indian company. And that's when Vedanta went. There was a newspaper article that said that Vedanta went along with Foxconn to meet investors to say, please, can you give us money to make this investment? Nobody wanted to invest with them. Why? Because they know, yeah, Vedanta has no expertise and Foxconn has no expertise. So why will you invest money? The best idea, if you ask me. Fact. Yeah. Very good information, very good information. And one more thing, like I worked in a this chip factory, especially in one of the capex project of Intel, very closely, so I know few technical things also. If you look at the like when the initially the project was planned in Pune, Talegaon, and they moved that project overnight from the Pune Talegaon to the Dolera. There is a very good requirement for the this capex project is the quality of the water, the enough the there is abundance of water, the good quality of the water, and then labor. So there is whenever they are moving the project like the Dolera, like the strategical projects, and there is a, I heard there is a drift going between the right now the Foxconn and Vedanta, because they're moving the project overnight for for the Gujarat elections from the Maharashtra to where the resources were available compared to the Gujarat. And so many things are there, we can talk, but we will be 10,000 miles away from the a Hindenburg's topic. Only thing I can say that that project will be not successful there because wine and dine and so many things are there, and Foxconn is not happy with the what Vedanta is doing. And this is very important, points you are making. So please go ahead. Oh, 1 minute, just interjecting. Keep this topic going for at least another half an hour because I'm walking my dog, and this is the area where I'm hugely invested currently. My semiconductor, so I can contribute and help you guys understand this space better. But I'm walking my dog, so keep this at least for 15-20 minutes, and then they'll get back to you. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले उसको जरूरी है Just come back and talk. I'm not a I wouldn't say I'm an expert, but I've read a little bit, a decent amount, and I used to invest in semiconductor stock as well.
But No, not stock. We are invested in this industry right here in the US, and ASML, which is the lithography machine in Netherlands. I've been in this space for over 10 years now. 20, no, 17 years. So semiconductors is very close to my heart. I think one of the, it's the oil of the future. I mean, it's oil of the present and future. So it needs to be debated because, and I go back on my timeline. While I'm walking, because it's really cold here. It's minus 17 degrees. So what I'm saying is, go back on my timeline. I've covered this issue at depth. India is nowhere in the picture. So this Foxconn and Vedanta, to make it short for now, is complete another shell waiting to be cracked open. There's no merit to the whole project. And as Gajaba rightly said, water plays a big part. And if it's going to be moving to places where the water is scarcity, I really doubt the viability of this project. But yeah, so keep this topic going on, because if you go back to Adani, then you can carry on. But if you're on the semiconductor, I'll join you in about 15 to 20 minutes. yeah, no. So basic point is that in fact, I personally am of the view that we should not have semiconductor manufacturing in India. Because one, the chances of success, if you don't do it with the right partner, is very low. If I had any suggestion to make to the government of India, this is what I would do. I would tell them that the government of India should approach TSMC and Intel and say, listen, we just need a 10% stake in your company as an evergreen thing, what's it, share in the company. Everything else is yours. You run the company, everything you do, and eventually we'll list the company in India and we'll give you 50%. This is the kind of model that they did for Maruti. Suzuki came to India. The government of India had a stake in, got a stake in the company, did not interfere in the manufacturing of the company. The company ran like a normal company. And eventually, the government of India sold their stake in Maruti and made money, right? So they made a return on investment. This is the model they should do. Why should they give free money under PLI to anybody? Shouldn't the government say, okay, I will give you the money. Any MNC wants to come to India, I will give you the money. I'm your partner. I will not interfere with you at all. You run the company as you want. I will give you all approvals and all of that. That is the way PLI should be run. The current way that PLI is getting run is completely fraud. And in fact, Raghuram Rajan also wrote about it. Secondly, I don't think we should do semiconductor manufacturing because of the water issue in our country. India has got a serious water issue. And in fact, we should focus on our strength. India is very good at chip design. India could go into something like manufacturing of equipment. Actually, the biggest, so here is a very interesting data point. Taiwan is 30% of the world in semiconductor manufacturing. But when you consider the entire value chain, which includes design, testing, manufacturing, uh, equipment, everything in the entire semiconductor value chain, Taiwan's market share in the globe is only 6%. US's share is 31%. So, just because they have 31% market share in semiconductors, as a total of the semiconductor value chain, they're only 6%. So, we are trying to focus on a segment which is small, which requires water, which requires a lot of investment, right? It doesn't make sense for us to do this because the return on equity on semiconductors is very low unless you are a leader like TSMC or Intel. Otherwise, the return on capital is extremely low and the chances of success are very low. So that is, I personally view that the government is doing exactly the wrong thing that they should be doing, and we are just wasting our money. And my sense is that a lot of that money is going back into electoral bonds and coming to the eventually. That's how it's going to go. Because it's a subsidy, right? You can't track how much capex you can do, right? Who's going to track it? If a company says I'm spending $20 billion on a semiconductor fab, how are you going to do checking and say yes, they spent $20 billion, right? So that is one issue. The second issue, for example, is on in this entire. Uh, it's a separate issue. This, ethanol blending.
I think it is the most stupidest policy in our country. You should not have ethanol blending, because for 1 liter of ethanol, the footprint water footprint means how much water you give to the plant through the life of the plant so that it produces 1 liter of ethanol. The water footprint of ethanol is 3000 liters for 1 liter of ethanol. Okay. And India is already short of water. In fact, in Maharashtra, 70% of irrigation water is used for sugarcane. Okay. It doesn't make sense. If you go for more ethanol blending, if you double it, it means more and more water will be used for sugarcane. Why do we want to use it Yes. for sugarcane? It doesn't make sense. Moreover, if we use ethanol, the efficiency, I'm sure 99% of you people are not aware that, and this is given in the Niti Aayog report, if you have a petrol car and you use 10% ethanol blending, your mileage of your car goes down by 7%. How many of you people knew that? So, if I was using pure petrol, I'm getting certain mileage, say 15. If I'm using ethanol blended, I'm getting 15 minus 7% is 7%. So that's 14. So I'm now think about 7% for the entire country. India consumes 18 lakh crore liters. 7% of 18 lakh crore liters is about 1 lakh crores into 1 rupee a liter, 100 rupees a liter. It doesn't make sense. We're losing 100,000. We're using sorry. We're going to lose 100,000 lakhs, 100,000 lakh crores. Sorry, 1 lakh crores, just because we are going to use inefficient ethanol blended fuel. But nobody knows that the engine efficiency is reduced with ethanol. And if you increase your ethanol blending to 20%, your efficiency even becomes worse. That is one, because you don't change your engine. No, you would have used your old engine. You would have bought a car 5 years ago, 6 years ago. That was not designed for this much of ethanol blending. Thirdly, and not many countries in the world have such a high level of ethanol blending, right? So it's a very stupid policy. But here is the most stupidest policy. The cost of making 1 liter of petrol is only some 35-40 rupees. The cost of making 1 liter of ethanol is 65 to 70 rupees. Now you pay 100 rupees for a liter of petrol. Out of that 100 rupees, 35 rupees or 40 rupees is petrol cost, 60 rupees is taxes. So the taxes go to the government of India. It could be the state government or it could be the central government. If you use ethanol, you're spending 65 rupees to 70 rupees to make 1 liter of ethanol, which means, but you're still paying 100 rupees, which means your tax to the government of India is reducing. Why will you want to reduce your tax? Stupid. So government of India, as it increases the ethanol usage, will lose 1,50,000 crores in tax income. It's stupid. So think about it. You're using ethanol, which will affect your environment and reduce your water. You're using water. There's a shortage of drinking water. How do you value, water? You pay to drink water, you pay 20 rupees a liter. I'm not saying you pay 20 rupees a liter for normal water, which comes in your tap, but think about, the amount of water you will use for ethanol. Like as I said, right, 70% of your ethanol, 70% of your sugarcane in 70% of irrigation water in Maharashtra is just sugarcane. So you will increase that to 100%. Stupidity. So you will lose water, you will lose taxes. Why will you lose taxes? It's stupid. And you will lose engine efficiency. So if you add it all up, you will lose 250,000 crores. But the government of India is saying we will save 30,000 crores on forex. To save 30,000 crores, you're going to lose 250,000 crores. Wow, amazing. I will stop here if you have questions. Y- yes, one more thing I would like to add, like as you mentioned, that
water scarcity in uh, like Maharashtra, especially for this sugarcane farming. People are drilling, like a wells 1,200 feet deep even, and that is very very bad. Whatever the waters they are getting, the quality of water is not that great. And second thing, what you said, the 100 million company signing a contract for 3 billion here in Maharashtra. The previous MOU, the company's capital market capital is only less than 1 crore, and they're signing a contract with the companies like the air product for 3 to 4 billion dollars. And like when I posted something on that, the tweet went very very viral. The guy who is signed a contract with the government immediately called me. He got a number somehow, and he called me and said like, please delete that tweet because this is going to affect me. So Vikashji, please go ahead. Okay, thanks. Thanks, Fact You have given the very important information on that fuel and ethanol. My question is just what I come back on the issue of Adani. Can you tell that what is the exposure of national pension schemes to the Adani Group? I have no idea. Okay, thanks. But let me put it this way: the pension schemes are putting in money through the Nifty ETF and the Next Nifty ETF. There are two ETFs, right? One is Nifty 50 and one is Nifty Next 50, right? Money is going in through the ETFs from EPFO, then they will do it from ESIC and also from NPS from the PSU. So essentially, that exposure, you can make out what is the exposure over there, but the problem that exposure is not reducing. No, every month that exposure keeps increasing. Okay, thanks. In case of Adani, sorry, may I speak? Okay, Captain. Yeah, I'm saying we were slightly lucky in the sense that the introduction of Adani Enterprises happened just 2 months back. I think it's October or maybe in late November. September. So pension fund, yeah. So they have been relatively late in procuring their documents and fudging the data and doing other things. So we have just escaped. So pension fund definitely wouldn't be having much exposure, and ETF and other mutual funds have completely avoided. So in that sense, they are lucky. But individual investors, Why did you say ETFs have avoided? see, when I see the mutual funds in almost all, except for the Quant and one other mutual fund, the exposure of almost all the mutual funds, specifically into the Adani group of companies, is not there. So you're mixing up two things. I'm talking about ETFs. ETFs are two. There are two ETFs. One is the Nifty 50 ETF and one is the Nifty Next 50. The Nifty 50 has Adani Enterprises. It doesn't matter when Adani Enterprises enter the index, because as soon as it enters the index, it replaces another stock. So all the weightage gets reflected instantaneously. Okay. Yeah, that's correct, fact Okay. finder. Secondly, let me finish. Yeah. The second is you are referring to active mutual funds. You're right. Amongst the Yeah. active mutual funds, there are two types again. One is the arbitrage funds and one is the non-arbitrage fund. Now, arbitrage funds might show as ownership of Adani because if somebody is buying Adani futures and giving a premium, these guys try and capture that arbitrage. So that there's arbitrage funds are nothing but equity oriented, but they give you debt returns. The second category is the quant funds, and there's only one quant fund that does it, which is why, and they're not very big, and they own Adani stocks. And the third is normal active funds. Most of them do not own Adani stocks. If they do, it's Adani ports primarily.
Yeah, that's what I'm saying. In the Indian market, there are smart uh, people also. So Hindenburg has come just 3 4 days back, and this noise is being made. But the smarter people in India also, even the normal investors, I'm quite sure the fact finder wouldn't have bought even a single share of Adani. So there are smart people here also, No, and um, including. yeah, don't say that because I knew what LIC was up to. I knew what LIC was up to over 2.5 years ago. Yeah. So when I knew what they were doing, and by the way, LIC is not just doing it for Adani Group; they're doing it even for the Tata Group companies. Absolutely, Okay, absolutely. they're doing it even for Dixon Technologies. They did Yeah, it. long back they Yeah. bailed out UTI. If I'm No, not I'm talking about ah, the IT LIC did this sudden change starting 2018 onwards. Okay, so they decided like they bought Kotak Bank and they kept on buying Kotak Bank and Kotak became very expensive. Then they started buying Bajaj Finance and they pulled up Bajaj Finance and Bajaj Finance became very expensive. They did the same thing with Dixon Technologies. They did the same thing with IRCTC. When every mutual fund was selling, LIC was buying IRCTC and pulling it up, and so it entered the index. Tata LIC pulled that up, and it entered the index. Then they stopped buying. So LIC is not only doing it for LIC did this for JSW and Energy. They kept on pulling the stock up 200% or 250%, and then they allowed it to fall after that. Okay, so LIC is not just doing it only for Adani. They're doing it for Tata. Is doing it for JSW. They're doing it for IRCTC because they also understand if you pull up the stock, it enters the MSCI index and the FTSE index, and so ETFs are forced to buy it. So they also understand the game. fact finder. I'm not saying that LIC is doing today or it was not doing 20 years back. It has bailed out even the UTI Unit 64 when it became bankrupt, and when Jaswant Sinha, he was the finance minister at that time. Also, this kind of a thing happened. So whenever something is losing its balance, they have come in the market. They have supported the government and they have supported the entities. It's nothing new. But when the company goes berserk and they completely defy all rules, they completely do the misgovernance, and instead of government asking questions, SEBI and other regulators asking and putting them on the mat, they also join the hands and put the money of the banks and the government investors at such stake. That is what is not warranted from the government as well as these regulators. Sir, I have given up. Uh, I voted for this government in 2014 thinking they were a difference. But after 2016, when they did demonetization and I understood about demonetization, I realized this government doesn't care about people. Okay. And after that, every single policy that they have done has resulted in the losses of 45 million jobs in our country. I don't think this government cares for people at all. In fact, I think they want people to remain poor and dependent on the government. Because if they remain poor and they depend on the government, poor people are very happy. If you are a poor person and somebody gives you money, you are very happy to that person. So that's what the government wants to do. Keep you poor, but make you dependent on government. So you're happy. If you look at the Gujarat model, Gujarat education levels and the schools are lower than the average of the country. And it is one of the highest per capita state in the world, in the country. And still their schools, their hospital number of beds per 1 lakh people is lower than even UP. And UP is considered, UP and BR are considered, at the lowest levels. And I'm not trying to say something against UP and Bihar. I'm just trying to tell you, but it's a fact, right? Gujarat has same per capita income as Tamil Nadu, but the amount of poverty, and this is government numbers, is 20%.
Poverty in Tamil Nadu is 4%, or 4.9% and 19%. That's crazy. So I don't believe anything what this government says. They do everything for narrative. I mean, every policy is wrong as far as I'm concerned. I don't think of a single policy that they have done is been good. Even the PLI scheme is a very bad policy, because earlier there used to be a policy called MEIS. Okay, that policy was basically providing an incentive for exporters. That had a budget of 50,000 crores, but government removed the MEIS scheme and came out with two other schemes. One is called PLI and one is called RODEP. The total budget of RODEP and PLI is lower than MEIS. So you remove 50,000 and you gave 20,000 crores, and you gave two new names. Stupid. The 50,000 MEIS, the good thing was that was open to everybody, including MSMEs. 80% of our jobs in our country, which are not agri jobs, are MSMEs. You remove the incentive for MSMEs and say you will give it only to a few corporates. Why would you do that? Stupid. Fact finder, I'm completely with you. With Adani's capex 22 lakh crore, now probably it has reduced by 6 lakh crore or something, with the 2 days of massacre. You're talking about market cap, not talking about capex. Yeah, sorry, market cap 22 lakh, and you can minus it around 6 lakh, 6.5 lakh crore. Now in MSME, every 1 lakh, every crore, minimum 250 and maximum 1,000. And their 22 lakh crore has employed just 50,000 people. That's in the research work of Hindenburg. We also know how much of employability which has been generated by the private sector, and especially by Adani Group. So what are we doing? PLI and other loan facilities, the agri loans, all of the bank loans have been completely been absent for the smaller enterprise, for MSMEs, for job generating smaller businesses. So, and that's why the country is taken hit. After demonetization, having come money in the banks, they have been completely given to the corporate world, and the bulk of the population, which was giving either jobs or for a self enterprising, got completely washed away. So the individuals, the normal public doesn't have money today. Neither they have the job nor they have the money in the hand. Thus, these companies, which is generating the products or whatever, the purchase power has gone for a six. You're right. Right. Let me just share one data point of that. Every one of you can go to Hindustan Unilever website. Find under a tab called Investors. Go to Investor tab, and there you look for quarterly financial reports. Click on quarterly financial reports and click on quarter 3 FY23 presentation. Also go to quarter 2 FY23 presentation. In the quarter 3 presentation, they will show you Hindustan Lever volume growth was 5%. In the next page, they will show you in the industry and the segments in which Hindustan Lever operates, what is the industry volume growth? Because obviously, Hindustan Lever will do better than the competition because it's a far more superior company, smarter people, all of that, right? And they have better brands. So Hindustan Lever's the volume growth for the entire industry, both in rural India and urban India, has declined for the last 3 years. There is no volume growth in consumer product FMCG products in for 3 years. There is a company called and you can look at this data. It's given by Hindustan Lever. Every quarter they give you this data. What is Hindustan Lever's volume growth and what is the volume growth for the industry?
as a whole, total industry, including other competition. Then you can go to a company called Group M. Group M is the world's largest advertising and promotion company. They have a subsidiary called Kantar Global, KNTAR. Kantar Global comes out with a report every 2-3 months. Their report is that packaged food consumption for family, packaged food consumption for per family in grammage terms, how many grams of packaged foods people consume per family. Between COVID and today, it has gone down by 30%. What has happened? The size of the pack is reduced, so number of packets have increased, but the size of the packets is reduced so much that the volume has actually declined per family. It's not, sorry, not 30%, it's 15%. Basically, there's a 15%, there's a I think a 10% growth in the volumes and a 30% decline in grammage. As a result, actual volume consumption per family has reduced by 15 to 17% in 3 years. That's how bad it is, consumption, because of inflation. Sorry, I stopped you there, but I just want to add data. Oh no, your suggestions and any additions are so. One more question. See, in any of the countries, or even for that sake, in India, have you seen farmers protest for 1 year, and that farmers protest is being protected or being brushed aside just for the corporates? You wanted to double the income, and they're asking for minimum support price. What is so wrong that they were asking for? Anyway, it may not be tenable, and the economy may not be able to bear, but some kind of like Madhya Pradesh, they came with Bhavantar. They were giving just the price difference. They could find out the market price, and whatever should be the minimum support price, that much of difference they were paying. That was a wonderful scheme, and it did a lot of good to the farmers. Now you see Chhattisgarh, every year they have given MSP support to the farmers, and you see the kind of tonnage and kind of money those farmers have got it in Chhattisgarh. I mean, the volume of money which these farmers have received in Chhattisgarh, they are quite buoyant. So if you give money in the hands of the larger sections of the society, large number of people and public, then only your industry and the corporates and the businesses, they will flourish. I mean, that's my take. So So I'll explain to you. yeah. I agree with you on the MSP, but I have a slightly different view. See, the problem is that our farm land is very highly distributed, right? 85% of the farmers have only 2 acres of land. That's it, or less than 2 acres of land. So it is when you have 2 acres of land, the maximum amount of income after costs you might make is 25,000 per acre per year. Okay, and so you have 2 acres, you'll have 50,000, which is why most farmers earn about 45 to 50% of the income being as a laborer in somebody else's farm. Because just having that 2 acres of farm and a family, you cannot survive. So you have to work in somebody else's farm also, as well as do your own farm. Now, you're right about MSP, but let me just tell you, only 7% of India's rice and wheat, only 7%, is bought at MSP price. The remaining is bought below MSP price. Okay? So, which is one of the reasons why, as you mentioned, a couple of states have said that we will bridge the difference. But most states are not doing that. Now, I'll tell you my fundamental problem with MSP. I think MSP is a good thing, and I think it should happen because there are a lot of poor people. Like, my view is that India's middle class, which in my view is anybody who earns above 50,000 rupees a month, if you call them middle class,
then India has only 2.5% people as middle class. That's all. Our middle class is only 2.5%. Okay. In terms of number of families, only 7% of families are middle class. Everybody else is poor in India. Now, going back to my suggestion to the government, if they were to listen to me, is to introduce MSP for crops and spend a lot of money on the infrastructure for supply chain. See, India is not shortage of wheat or rice, but most people can't keep only eating wheat and rice. They have to eat fruits and vegetables, right? They need proteins, right? We are short of fruits and vegetables because 40% of the fruits and vegetables are lost in transit because we don't have supply chain. So what the government should be doing is two things. One, they should invest on supply chain, but also introduce MSP on fruits and vegetables. What does a farmer want? He wants two things. He wants a price that he knows. He says, oh, at the end of the year, I'm going to get this price. And he says that if I get this price, I need to see that somebody takes it, right? Somebody has to buy it from me. So a farmer only wants those two things. If you have supply chain, somebody will buy it. If you have a MSP, the farmer knows what price he's going to get for his rice, vegetables and fruits. So he will then move away from rice and wheat and go to vegetables and fruits because India has excess of rice and wheat. And you and I can't keep eating only rice and wheat. We have to eat fruits, vegetables, and other protein. But we are losing 40% of our fruits and vegetables because of transit, because we don't have a good supply chain. So the government should focus saying two things. We will introduce a vegetables. We will we will slowly reduce or discontinue rice and wheat and introduce an MS. Why? Because already there's a supply chain for rice and wheat, and we will introduce a MSP fruits and vegetables and have a supply chain investment. So that way the farmers diversify. It's better for crops, it's better for the environment, it's better for fertilizer consumption, it's better for everything, and it's better for 35% of India. This is according to the national family health report that came out in 21-22. 35% of kids in India are suffering from stunting, which means they are shorter for their age. Why? Because they're not having enough of protein and fruits and vegetables. So we have to solve that problem. And that problem is to supply fruits and vegetables at a reasonable price. And we can do that reasonable price if we don't lose 40%. And how do we not lose 40%? Is by having better infrastructure, which is essentially your supply chain, warehouses, cold storage. And we have farmers who are going to produce it. If more farmers produces, the cost will go down. So I just thought, I mean, we did that for apples, right? You get apples from Kashmir or whatever, right? I mean, I'm just saying they have a proper supply chain, they have a proper storage, they have proper warehouses. We need to do that across the country for fruits and vegetables. And how do you do that? Introduce MSP for that. I feel, Fact finder. Yes, sorry. Gajabao. Yeah, go ahead, sir. Gajabao. I'll speak after you. because one thing I agree regarding your logistic what you were talking about. I'll say one thing, logistic can only be, like a cost of logistic should go down, if only, and that is only possible if you keep the, reduce the energy prices. I mean to say, especially the oil and petrol and diesel prices. And mostly the logistic in India is depends on the trucking, and if that goes down, then logistic prices will go down. But the I'm totally against, the fruit prices going down, because that is not going to help the farmer. If produce prices are stable, that will help the farmer. That's it. Okay. Let me jut in here. Kian, just one point I would like to add here. We are talking about this malnutrition, stunting, and other thing, because I am in healthcare, so I just wanted to add one more point here. Recently, the report that came about malnutrition in India. You wanted to say something?
अरे Can you hear me? भाई थोड़ा एक माइक ऑन रखें, एक माइक. I think fact finder को मेरी आवाज नहीं आ रही. I think fact finder can't hear me. So I was just saying कि जब malnutrition पे report आती है तो our government very proudly says that we are providing ration to 80 Is anybody speaking? crore family. हाँ बोलें. Fact finder. I think Kayan wanted to speak. Let's go back to the point of supply chain logistics. That's been an issue with India for a long time. That's interlinked with other infrastructure spending. So, wo bhul jao. And as a farmer also, my family, we are the oldest coffee farmers in Chikmagalur, in Karnataka. And of course, my uncles have, see the difference. Fact finder, do you have any farming background? Incidentally, in the same place that you spoke about, in the same product that you spoke about. Oh, wonderful. So yeah, we have I don't know if the coffee board chairman was my brother-in-law for a long time. So now the thing is, see, rice, wheat, maize is a cash crop, okay? And sugarcane in India is a cash crop. Now, those are completely different. I think MSP support for them makes sense because those are cash crops. MSP support for fruits, vegetables, you can even coffee and tea can be considered cash crop because they are more shelf stable products. So the MSP can be introduced to both coffee. Of course, coffee little dicey, but tea more so. But fruits and vegetables में नहीं हो सकता MSP for a big reason because fruit and vegetable are मार्केट में जो डिमांड होता है उसके अभी और एक जगह पे कर सकते हैं इन लोग पोल्ट्री पे एमएसपी ला सकते हैं क्योंकि आपको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन आता है एनिमल प्रोडक्ट और आपको पूरा अमाइनो बीसीसीए अमाइनो एसिड चाहिए तो आपको पोल्ट्री खाना ही पड़ेगा B12 के लिए यानी मीट प्रोडक्ट खाना ही पड़ेगा आप खाली पनीर और कीनवा इससे आपका B12 आपको मिलेगा नहीं इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट सो B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ तो वो भूल जाओ तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम ही होता है एक तो उसका शेल्फ स्टेबल नहीं होता तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बराबर है उस पे एमएसपी नहीं दे सकते उस पे एमएसपी दोगे और यू कैन नॉट सिंस यू आर इनटू द सेम प्रोडक्ट यू आर इनटू कॉफी फार्मिंग यू शुड नो not every aggregable land is interchangeable. Like my friend in Sangli in Maharashtra has he grows what do you call pomegranate anar. He's one of the biggest pomegranate farmers there. He wanted to switch to grape farming because wine जब सामन ने नासिक में वो वाइन लाया सूला वाइन उस वाइन लेकिन देखो टोपोग्राफिकल नीड सॉइल की कंडीशंस ये देख के आप और राइस और पैडी राइस कॉर्न और मेज का फील्ड में आप आलू आप एप्पल और संतरा नहीं उगा सकते कंप्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और सिक्लिकल आप जैसा बोल रहे हो वो कैश क्रॉप जैसे यूएस में भी वही प्रॉब्लम होता है जहाँ पे सॉय और कॉर्न और इसकी उत्पादन होता है वहाँ पे दूसरा कोई चीज नहीं होता है इसलिए हमारे मिड वेस्ट इज कम्प्लीटली कैश क्रॉप बेल्ट वेर एज California and Florida grow fruits and oranges. Okay, fruits. California is known for avocados to everything, and Florida because those are more more conducive weather conditions. तो ये आपका एमएस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक तो राहुल गांधी भी वही बोल रहे कि जहाँ पे उसका अगर ऑरेंज उग रहा है ऑरेंज का ग्रोथ हो रहा है वहीं पे आप जैम की फैक्ट्री डालो वहीं पे आप स्क्वाश की फैक्ट्री जो हुआ है नागपुर में जो नोगा था नेशनल ऑरेंज ग्रोवर्स एसोसिएशन वही था प्रॉब्लम क्या हो गया मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद सब प्राइवेटाइज कर दिया उनको लगता है प्राइवेट हैंडल्स बेटर विच वॉज ट्रू अप अंटिल द क्रोनी सोशलिज्म आई कॉल इट आ गया क्योंकि प्राइवेट हैंडल्स इट बेटर इफ प्राइवेट रेजेस कैपिटल प्राइवेटली इट डज नॉट it depends on government largesses tax rebates and everything then private का मतलब ही नहीं है then actually it's a social run by private people profits go to private तो जैसे एप्पल ग्रोज हिमाचल प्रदेश में था तो मेरा बोला क्योंकि जैसे कॉफी बोर्ड है इफ यू आर इनटू कॉफी बिजनेस यू शुड नो कॉफी बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के इंडिया टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कॉफी ग्रोज इन द वर्ल्ड तो आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल पे एमएसपी का डिमांड पर्सनली नॉट पर्सनली प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ एज अ फार्मर नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रूट और उस पर इट्स मार्केट ड्रिवन आम कोई
दिसंबर में नहीं खाएगा हापुस आम, उनको खाने का सीजन होगा, उसी में होगा, तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगा. एप्पल, वेरी फ्यू आर ईयर राउंड फ्रूट्स, वन ऑफ देम इज एप्पल. सेम विथ वेजिटेबल्स, a lot of vegetables, because we get our source of monsoon is from only one side. I mean, we don't get jet streams, we only get monsoon. So you have to understand that those separation of two. तो हमारे यहाँ पे वो पैटर्न होता है, वो पैटर्न जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र और साउथ में मई एंड से लेके गणपति के बाद तक जनरली जो इवन गुजरात में कल्चर देखा गया, खाली कटोल खाते, कटोल यानी ड्राई पल्सेस, बिकॉज उस टाइम पे जो उगने वाले कॉलीफ्लावर हो, स्पिनच हो, ये हो, उसमें काफ़ी सारे कीटाणु और ये सब होने के चांसेस है, बिकॉज अपना वेदर कंडीशन. और अगर आपको ऑर्गेनिक जाना है तो और प्रॉब्लम होता है. तो इंडिया को अगर आपको सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन देना इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, आपको हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री में आपको बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव कुछ देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वेयर योर protein comes from. Fruits, no fruit on this earth gives protein. In fact, I would go against fruit for two reasons. Fruit is very bad because fructose your liver does not process really proper. I mean, doctors here will know. Actually, fruits are bigger villain than glucose, which comes from sugar. It's better to have 2 spoonful of sugar than to have fructose, because your liver, because of my son's liver condition, I know that liver does not metabolize. So we have to reduce his fruit intake. So fruits I'm not, but yeah, nuts. But India is not India's, other than cashew nut, which grows in Goa and some parts of Kerala, cashew nut is actually not big. Then you have India's big spice basket in Kerala. Again, does not require MSP because shelf stable. But they can be helped with MSP. Like pepper and cardamom can be helped with MSP because there's shelf, and it's almost a quasi cash crop. तो एमएसपी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिमांड करोगे तो इन लोग एक्सक्यूज लेके देखो एमएसपी की, तो एमएसपी चाहिए कैश क्रॉप पे. एंड जो आप लिस्ट बनाओ कैश क्रॉप का, उस सब पे एमएसपी चाहिए. बिकॉज और इंडिया को जैसे यूएस में या तो दुनिया के कोई भी बड़े पॉपुलेशन वाली जगह पे सबसे बड़ा सस्टेनेंस आपका आता है कार्बोहाइड्रेट से. कुछ नहीं कर सकते. आई मीन वेदर गुड और बैड, अगर आपको 150 करोड़ पब्लिक को फीड करना है तो आपको कैश क्रॉप पे इंसेंटिव रखना पड़ेगा ताकि ग्रो करे. सप्लीमेंटली मैं बोल रहा हूँ पोल्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उस पे वो आपको अंडा मिलेगा, वहाँ से चिकन मिलेगा, बहुत कुछ चिकन स्टॉक मिलता है उसका और उसके बोन प्रोडक्ट्स, उसमें हर चीज़ पे आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो. फिर आपको गोट फार्मिंग तो करनी, दुनिया में कहीं गोट इज बेसिकली ओपन ग्रेज, उस पर अगर आपको अभी बीफ की बात छेड़ूंगा यहाँ पे तो लोग मेरे पे टूट पड़ेंगे, तो बीफ तो भूल जाओ. पोर्क इंडिया में उतना खाया नहीं जाता वो प्रमाण में, तो इंडिया के लिए फिश और चिकन पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा. लेकिन फिश का प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि वन ऑफ माई क्लाइंट्स बैक इन द डे वॉज चाम एक्सपोर्ट्स विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ पोरबंदर गुजरात. प्रॉब्लम क्या होता है फिश में कि बाद में फिश फार्मिंग होने लगती है तो लॉट ऑफ डिजीजेस स्टार्ट स्प्रेडिंग. सो I don't know, unless there is a ethical way of fishing industry, because अपने Indian Ocean में काफ़ी toxic oil leakages और oil drains in past 10-15 years बहुत हुए. तो कितना वो fish mercury level check कर, लेकिन fish was a very good industry because we have coast on all 3 sides, but the problem is we didn't keep our waters clean. So I don't know if I can advocate for fish, but chicken और egg simple है, उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे अलॉन्ग विथ कैश क्रॉप्स. तो मेरे ख्याल से इंडिया का माल न्यूट्रिशन, इन लोग ने अंडा भी बहुत, मैंने आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन ऑन ग्राउंड, बट मैंने सुना है काफ़ी स्टेट्स में तो अंडा भी बच्चों लोग को मील से निकाल दिया गया. तो अभी ऐसा करेंगे तो आप back to the 1940s 1930s की इंडिया, where 1 in every 3 child is going to be severely malnourished और डेथ इन्फेंसी रेट बढ़ जाएगा. वो तो डॉक्टर्स इन दिस स्पेस कैन एड्रेस दैट बेटर. बट एज अ पर्सन हु इज इन्वेस्टेड इन फार्मिंग बिग टाइम, स्पेशली coffee, arecanut and cardamom, because it's all together. If you are from there, it grows under shade of one another. तो ये सब मेरे ख्याल से एज फार एज फार्मिंग गोस, तो मेरा ये ख्याल है कि, और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इज परफेक्ट, बट राहुल गांधी इज बीन सेइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इन लोगों ने उनका मीम बनाया, सोना से आलू से सोना कुछ कर दिया, गलत मतलब निकाला, क्योंकि बराबर बोल रहे थे जहाँ पे उत्पादन हो रहा है. जैसे कुरियन जी ने इसके बारे में दूध का किया था, अमूल का दूध को लिया कोऑपरेटिव. इंडिया नीड्स
कोऑपरेटिव जो बन गया था आफ्टर मॉडल, अमूल के मॉडल पे बन गया था, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, कैसे हुआ? जैसे और नोगा आपने सुना होगा, नोगा जैम आता था, ऐड आता था बचपन में, दैट वाज नागपुर ऑरेंज ग्रोवर्स एसोसिएशन। ऐसे इन लोग ने अगर कोऑपरेटिव बनाया होता हर जगह, एपी एपी करके मेरे ख्याल से नॉर्थ में, हिमाचल में, फॉरगेट द नेम ऑफ द एप्पल एसोसिएशन, ये सब थे। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर था, उसको खाली एक्सपांड करके उसको सपोर्ट करना था। जैसे अमूल को इंडिया वाज मिल्क डेफिशिएंट से इंडिया बिकेम मिल्क सरप्लस थैंक्स टू इंदिरा गांधी। आई मीन लोग इंदिरा गांधी को जो भी नाम दे, वो दूध आज सबके घर पे दूध पहुंच रहा है और इंडिया इज मिल्क सरप्लस कंट्री इज बिकॉज ऑफ कुरियन एंड इंदिरा गांधी, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया अमूल का। वैसे इनिशिएटिव, क्योंकि दूध सेल्फ स्टेबल नहीं है, तो उसको तुरंत जैसे ही आप गाय से, बैल से, जिससे भी निकाल, अरे गाय और भैंस से निकालते हो, वैसे इमीडिएटली आपको उसको पैस्चराइज करके स्टोर करना पड़ता है। फ्रूट्स का भी लगभग वही हाल है, थोड़ा ज़्यादा शेल्फ लाइफ है। लेकिन अगर वैसे ही, जैसे आपको मालूम है कि सर्टेन ज्योग्राफी में पालक या ये आप कर दो फ्रोजन, इमीडिएटली हार्वेस्ट। अगर ईयर राउंड आपको पालक खाना है, इमीडिएटली हार्वेस्ट। लेकिन वो ज्योग्राफी कंट्रोल होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पालक उग रहा है गुजरात में, दूसरा पालक उग रहा है उड़ीसा में, तो वो फिर अनलेस, देखो दूध का अमूल क्यों सब जगह नहीं हुआ, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन सेंटर गुजरात है। वैसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है, वहां पे आप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स लगा दो। जैसे हार्वेस्ट करोगे उसको वैक्यूम पैक करके फ्रोजन, और बाद में आपको घर पे पकाना है तो उसको तौ करके आप आपका पालक पनीर जो बनाना है बना सकते हो। तो है, लेकिन क्योंकि अपनी एग्रीकल्चर जो स्पेशली रिलेटेड टू वेजिटेबल्स और ये इज वेरी स्कैटर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो ये मैंने बहुत पहले, आई विल सेंड यू द रिपोर्ट वी हैड क्रिएटेड इन 2000 व्हेन मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट वाज देयर। ये रिपोर्ट पे प्रॉब्लम फ्रूट्स और फ्रूट्स काफी हद तक अच्छा है। जैसे मैंगो सक्सेसफुल है बिकॉज वो एक रत्नागिरी बेल्ट हमारे देवघर वो साइड पे ही होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे है। लेकिन वही होता है, फिर चौसा आपको मिलेगा यूपी में, फिर कर्नाटका में दूसरी वैरायटी है। तो अभी आइकन भाई, अपूर्वा हाँ, भी आए तो थोड़ा सा क्योंकि इनके पास वक्त नहीं रहता, तो थोड़ा इनको भी सुन लेते हैं, ओके चलेगा। है ना? हाँ, हेलो अपूर्वा भाई। अपूर्वा जी। हाँ रिजवान भाई, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। एम आई ऑडिबल? जी जी जी। देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मुझे आती भी नहीं इतना। मैं तो दो तीन बातें कह रहा हूँ बहुत नॉर्मल, जो क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं तो ज्यादा टेक्निकल इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है। मैं आज एक स्पेस में दिन में बोल रहा था, शायद बहुत लोग होंगे भी थोड़े बहुत यहाँ पर। मैं यही बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स की समझ हमारी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी को इकोनॉमिक्स की समझ होती है, मतलब उसको समझ में आती है। जैसे मैं आज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं वेजिटेबल मार्केट में गया था, तो मैंने मेरे सब्जी वाले से पूछा कि क्या चल रहा था, बढ़िया चल रहा है। जैसे मैं पूछता रहता हूँ लोगों से, ग्राउंड पे फीडबैक होना जरूरी है। बोले सर पता चला कि बैंक ने एफडी रेट बढ़ा दी है, तो क्या जमा करूँ कि नहीं करूँ? मैंने एफडी रेट, मैंने कहा आपके ऊपर है, जमा करो, अच्छे रेट्स मिलेंगे तो मिल। बोले मैं नहीं जमा करूंगा, अगर मैं जमा करूंगा तो उसको लोन दे देंगे, वो भाग जाएगा। कितना सिंपल इकोनॉमिक्स बताया उसने मुझे। और हम लोग बैठ के यहाँ पे पी रेशियो, दुनिया भर के टेक्निकल टर्म्स और ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो शॉर्ट कर दिया, वो कर दिया। वी कैन डिस्कस एज मच एज वी कैन डिस्कस द इकोनॉमिक्स। द ग्राउंड रूल इज कि वेदर वी आर कन्वेइंग दिस मैसेज टू द एंड मैन और नॉट, कि हम लोग अपनी अपनी बातें उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है इस बात, वो समझ पा रहा है। क्या जैसे बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं इस बात? ये पूरा एक साइकिल है, एक पूरा सिस्टम बना है। दिस कंट्री नीड्स a phenomenal change and drastic change in system. The economic policies, the banking system, complete financial system, the support system, the entrepreneurship, the startup system has to be rebuilt from the scratch. But we are not doing that. We are discussing the problem. We all know the problem. So what is the solution? The solution lies between that we should be inspiring and motivating our young people to do this kind of stuff, and we need support system behind it. We have enough talent, we have a lot of potential in our young generation, but what we are doing there? We are not doing anything. We are only discussing on the spaces on Twitter.
मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा होगा मैं सरकास्टिक हो रहा हूँ, थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ चीजों के बारे में, लेकिन चीजें ऐसी ही हैं। आज से हम छह महीने बाद किसी और सेट को डिस्कस कर रहे होंगे, हम आज बैठकर हम किसी और हिंडरमैन की रिपोर्ट का डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ग्राउंड रूल ये है कि बेसिकली वी नीड टू चेंज द कंप्लीट सिस्टम। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो किस तरह किया जाना चाहिए, इस पर बात हो सकती है। लेकिन आम आदमी को पूरी समझ है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका पैसा, क्योंकि हम वो आदमी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इतना इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। ही डोंट हैव एनी ऑप्शन, वो ही डजंट केयर अबाउट द थिंग्स, ही डजंट नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग। उनको तो ये भी नहीं पता है कि अंबानी अडानी कौन है। लेट मी टेल यू, वो जितना पढ़ते हैं पेपर में उतना समझ जाते हैं कि हम बैंकिंग में रेट पढ़ाएंगे तो हम बैंक में जमा कराएंगे, उनको पैसा देकर भाग जाएंगे। सिंपल चीजें हैं। अगर सिंपल चीजों को हम समझाए जाएंगे और उनसे बात की जाएगी तो ही सॉल्यूशन निकलेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि उनके बच्चों को भी ताकत है, उनके बच्चों में कम टैलेंटेड नहीं है कि अडानी से अंबानी के बच्चे बन गए, उनके बन गए, वो अपने आप सेठ बन जाएंगे, सेठ के बेटे सेठ बनेगा। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में अब नया नया देश है, यंग लोगों का देश है। उनको ये बात पहुंचाना पड़ेगी कि आप भी सबसे बड़ा सेठ बन सकते हो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने साधनों के दम पर, अगर आपको सही साथ पे बेक किया जाए। क्यों हम गूगल, फेसबुक और ट्विटर नहीं बना पाए आज तक? क्यों हम कॉपी करते रहते हैं सबकी? हमारे पास इनफ टैलेंट है लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को अगर ये बातचीत हम लोग वहां तक पहुंचा पाए तो वी कैन डू इट, एंड वी कैन डू इट इन वेरी वेरी राइट मैन। ये पॉजिटिव नोट पे छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं आई एम लिसनिंग ऑल ऑफ यू। जी And सत्यावाद। one more thing is like when Fact Finder told saying like the ethanol blending is like really bad, and that's been happening right now with within the petrol and then some of the diesel also, I guess. So I was just browsing over the internet, so just to make sure that even I have a car, so even I was like surprised. What if my engine life goes down? So I was just googling around. So what I found was the octane 98 one, where the BP petrol bunks they give this kind of like high octane petrol that doesn't contain ethanol blending. That is like pure diesel or like pure petrol. So just in case, that is a little bit costlier, yes, but we cannot do anything because of this foolish decision that these people have done. So just in case if you people are like really concerned about your vehicles, you can get this high octane petrol or diesel, which is like very which is the purest form. So there's no adulteration, there's no lead, or there's no ethanol blending which happens in that petrol. Yeah. सचिन भाई मेरे को लिसनर में डाल दीजिए। अश्विनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको ऊपर करिए। अश्वनी जी का माइक एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। आशुतोष भाई को बहुत देर में हो पाया था, हम कर रहे हैं भाई। हाँ सुतेश। हाँ राइट, मेरा एक पॉइंट था, अभी थोड़ा सा पास हो गया वो। मैं पहले कहना चाह रहा था कि स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें मैं कुछ बताना चाह रहा था कि एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर में अबाउट मेल न्यूट्रिशन, तो जिसमें इंडिया की रैंक काफी लो थी। तो जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसको गवर्नमेंट मतलब सिरे से खारिज कर देती है, ये कहकर कि हम लोग राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर जो प्रॉब्लम है हम लोग नहीं समझते कि पेट भरना, लाइक फिलिंग योर स्टमक एंड गेटिंग न्यूट्रिशन आर टू डिफरेंट थिंग। You can eat your rice, and you can eat potatoes, other starchy things, and you can fill your belly by that, but that doesn't mean that you have good nutrition. तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है ना। ये NIN जो है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट ही इसको पब्लिश करती है और गवर्नमेंट ही उसको फॉलो नहीं करती। इसमें अगर आप वेजिटेरियन डाइट देखें चिल्ड्रन की भी ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको कितना कितना चाहिए। तो इसमें आपकी पल्सेस 30 ग्राम्स की चाहिए, मिल्क 100 ml की चाहिए। तो बात ये होती है ना कि जब अगर आप वेजिटेरियन भी खा रहे हो, तो मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कौन सा बेटर है, क्योंकि फिर लोग बुरा मान जाते हैं। पर मैं अगर आप वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, वेजिटेरियन अगर
आप खा रहे हो उससे आपकी सारी प्रोटीन नीड्स आपको कंप्लीट करनी है, तो उसमें आपको वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए आपकी प्रोटीन नीड्स कंप्लीट करने के लिए, और काफी अमाउंट में चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन की सिर्फ बात करें, अगर आप सिर्फ पल्सेस खा रहे हैं तो पल्सेस में आपको काफी अमाउंट ऑफ पल्सेस चाहिए टू एब्जॉर्ब एसिमिलेट उतना प्रोटीन। तो जो हमारी चिल्ड्रंस की ये रिपोर्ट ही बताती है कि हमारे 40% चिल्ड्रन मैल नरिश्ड, अंडर डेवलप्ड और स्टंटेड हैं, तो ये रिपोर्ट ही बताती है, शुरू में ही बताती है डिस्क्लेमर पे। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही बताती है जिसको गवर्नमेंट खुद डिनाई कर देती है जब कोई बाहर से बताता है। तो ये बात है। तो जस्ट इस मुद्दे का बेस यही था कि सिर्फ फिलिंग योर बेली इज नॉट इनफ, न्यूट्रिशियस फूड भी जरूरी है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आशुतोष भाई जी, अश्वनी जी। हाँ जी नमस्कार। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एंटर हुआ था जब एमएसपी और इसकी बात हो रही थी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया को मॉडल चाहिए वो कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ वो नहीं चाहिए इकोनॉमिक। वी नीड कोऑपरेटिव मॉडल। ठीक है। मनमोहन सिंह को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 1991 में जब रिफॉर्म्स हुए थे तो नरसिम्हा राव और he was finance minister Manmohan Singh. Now if you see his second, as a prime minister, what he tried to bring in: right to work, right to education, right to food, land, acquisition act. So basically his second term is one of the best economists, and he understands Indian economy better than anybody. I can tell you he understands economy better than anybody in the world as far as Indian economy goes. बाकी जो शेयर मार्केट है, it's all running on derivatives. It's a debt bubble. ठीक है. Where the share markets will go, what will happen to the share markets, I don't know, and I'll not comment on it because this is also, the underlying assets in derivatives is in quadrillion, what you call it. ठीक है. तो ये जो शेयर मार्केट है, people can comment anything on it, but I only like Sharad Shah and sometimes fact checker also. They have data, and fact checker has rightly told the packing have been reduced in weight. That's how I told you earlier also one day. The packing has been reduced. You think there is no inflation, but the pack size has gone by 10% or 20%, and the consumption has gone down. So basically, India needs a cooperative model, and basically, people at the bottom should get money. For the simple reason, the people at the bottom will spend higher percentage of money that is given to them, and the people at the top, they hardly spend. If they earn more by 30 or 40%, they'll hardly spend 1% more, or maybe 2% more, or maybe 5%, you can say, or you can club it as inflation, right? 7% or 10%. Now for middle class, inflation is more than 20%, and at the lower end it's of course 6-7%. वो जो 30% का जो वो है ना, that is because electricity rates have gone up, air freight has gone up, schooling fees has gone up. तो वो जो 30-35% पिंच कर रहा है वो मिडिल क्लास को कर रहा है. तो ये जो मिडिल क्लास है that is becoming poorer. तो जो मॉडल है, we have to prepare a model. MSP is a good thing. Cooperative model, it should be same like Operation Flood. I'm not saying cooperative in the sense कि जो dairy mill खुला था, not everywhere, but you have to understand that exports are essential. और जो labor intensive industries have to be seen so that everybody is employed, and we have to see that migration doesn't take place, because there is a lot of a problem because people are migrating to cities. It's creating a lot of other problems also. So policies have to be made holistically. India should try it for 10 to 15 years. They should plan it like 5-year plans used to be, that what and where they want to achieve. उसी के ऊपर policies बननी चाहिए. Money should go to the poor people. They should be put to work. That is the prime condition. Otherwise, the economy is going down. GDP, which was 8% till 2017, 7.5 to 8%.
has went down to 4% by last quarter of 2020, 1920. So handle 4 or 5 handle. So basically, it's not a K-shaped recovery. People call it K. It's all at the top. People at the top are making money. We are at a 30-year low in household savings. That I think everybody must have read. Those who understand it. So where we are going is now banks will lend less now. Bank loans which were going higher and higher because of inflation and personal loan and other loans, they will come down. So banks will be hit because the growth will come down automatically because there will be no taker for this kind of a thing. Middle class is slipping into poorer class. High income, high bracketed people, it doesn't make any difference if petrol goes to 300 or an aloo goes to 200. So basically the people at the bottom are suffering. We need drastic changes in the economic policies और इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक इकोनॉमिस्ट जिसकी फर्स्ट टर्म रही थी जो रिफॉर्म्स लाए थे he was doing exactly opposite in his 10 years as the prime minister. So it was a clear indication that the direction that the Indian economy was taking was not right somewhere. और हम जो ये कर रहे हैं कि 8% deduction, where have exports gone? Exports haven't gone anywhere. तो ये जो exports थे, they were more than 3 billion, 300, 300 billion. They were at that time also. And this time they have gone up last year because of the inflation. Because what we export is 15%, I think, is oil products, 10%, 9 to 10% is your jewelry, gems and jewelry. We import diamonds and we export, we process them and send it back. And 25 to 30% is machinery goods, which are directly related to the material cost. So the volume of export has also not gone up. So basically, all headline numbers like exports number, apart from service, IT sector has done well. Apart from that, none of the sectors have done well. Banking loans have gone up because of the inflation, and middle class borrowing to keep up pace with the expenditure. मेरा कहने का मतलब है there is a cooperative model, right, in economics, which is very vast. People can use it, and I think there were few people talking about it. I was really happy to listen to everybody. In fact, fact checker also gave very important information that HUL has, by volume, they have not gone up anywhere since 2019. And he was referring to a company, international company, which is showing that consumption per family has gone down. So this is the reality of it. Quantitative easing has created all nonsense in last 14 years. I think it was in Japan since 2000 and they have not reached anywhere. So basically, we'll have to understand कि हम economic policies क्या बनाते हैं. What is right for America is not right for Germany and what is right for Germany is not right for India. ये चीजों को हमको समझ के चलना पड़ेगा. What we are doing with the economy, that we have to understand कि what direction we have to take, what policies have to be made. Of course, basically, industries get help only when the consumption goes up. If you reduce their taxes, that doesn't make any sense because they were at capacity utilization of 65-70%. So it only helps the people at the top. Top are getting richer. So जो income भी आती है, that is basically what I have been writing is the incidence of inequality has gone up in India, and Oxfam report also indicates that. So people should understand what has to be done with the economy, where everything goes up. See what happens is economy, there is a dynamic. See, if people start consuming, industries go up, employment goes up, everything goes up. But the government has to take initiative to create more employment. They should concentrate more on labor intensive exports, which we are capable of.
And those people who talk of productivity are fools, because there is a difference between the labor cost in India and in America. So productivity has to be on the basis of the cost of a product. And we have lot of good things we would have exported if government had helped. So there are many things which government knows everything. They know each and every data. They can search for it. They can find out what is. They can create marketing. Like even Chhattisgarh has done something about it. They manufacture there and their products are being sold abroad. So you have to create an infrastructure. Government has to take an initiative. They have to spend money. And Fact Finder has said that 85% of the people, farmers, have only 2 acres of land. He is absolutely correct. So we have to do something about it. Whereby, see, basically you have to see that water level is going down in Punjab and Haryana. This is also very important. So basically, government has to take some kind of an initiative so that everybody gets benefited. Farmers earn more money. We get better products. Everybody gets everything. People get employed. That is how the economic policies are made. It's not it's not that you pick something from America, you pick something from Germany, you pick something from Israel, and think what is happening there is right, so it will help here also. We had negative real rate for so many years since this uh, RBI governor has come. He doesn't understand that most of the people here are poor. They get interest on their savings. So they depend on their interest on savings. मुझे तो समझ में ही नहीं आता. Everybody appreciates the policies which are made for rich people, because publicity, they can only do publicity. Poor are suffering. So I think government should listen to the poor people. They should make some kind of a policy initiative which should be continued for a period of 5 to 10 years, like we did after independence. If you study the economics of India, you would realize that people always keep on saying ki China was there and we are where. So people have to understand everything behind it. People just pass a comment, they don't understand the reality that we were in, what kind of a setup they have. Any other democracy in the world has not grown as fast as we have, even if you compare it with initial stages of American economy. You will just find out we had lot of differences, and we had lot of religion, caste, and so many things. So basically, we have to understand everything, from resources to education to social fabric to everything. So it's a total thing, and once we decide what action has to be taken, that has to be for a period of 10 years, and it should only support the poorer people of the society. Thank you very much. I have taken a lot of time. थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत आसमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. फैक्ट फाइंडर या अपूर्वा? फैक्ट फाइंडर Yeah. या हाँ अपूर्वा. You want to, Fact Finder, you want to add something on the Ashwin's point? So I have a different perspective. If you want to add some facts, you can go on. Sorry, Are you guys, there? I didn't fully listen to it. Because I had stepped out. But you go ahead. Not able to hear you properly, Fact Finder. The volume is very low. Yeah, what I said, can you hear me now? हाँ So यार. Yes, what I'm saying yes. is that I missed part of it because I just went to have my dinner. You go ahead, speak. If I think I can add something, I will add. If, yeah, just go ahead. Yeah, I have rather a question on this, because और सबसे सवाल यही है कि अश्विन भाई ने बताया कि क्या है इश्यूज, क्या है, सब कुछ है, हमको कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, कौन सा हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस देश में एक चीज देखी मैंने कि विरासत से चल रहा है सब कुछ. कि अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं अडानी के बारे में, तो सब कुछ विरासत से आ रहा है. मतलब मुझे कोई नहीं दिखता कि कोई सड़क से उठ के टैलेंटेड आदमी बहुत बड़ा सेठ बन गया हो. और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि वो 4-5 साल में बनना चाहिए, 10 साल में बनना चाहिए. वो अपना टाइम ले. लेकिन ये जो हेरिटेज सिस्टम चल रहा है ना,
पूरा ये जो 100 लोगों का क्लब है, ये कब तक चलेगा? मतलब वी नीड टू सॉर्ट आउट सम दिस सब सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन कि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कल वो किसी और को डिस्कस करें, किसी और को रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। आई लीस्ट बॉदर अबाउट शेयर मार्केट, क्योंकि 2 से 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता लोग। और कितने लोग डायरेक्ट टेस्ट देते हैं वो भी आपको पता है, इनडायरेक्ट टेस्ट हम सब लोग देते हैं, पर हमको ये पता है कि जो हमारा जो पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट है, वो जब हमने इकोनॉमिक इंक्लूजन किया था, इसी उद्देश्य से किया था कि वो पावर स्ट्रेंथ होगा, लेकिन उसकी जगह सरकार ने अपना चुनावी बांटना चालू कर दिया। दे स्टार्टेड इलेक्शन ब्रांड इन कैंपेनिंग इंस्टेड ऑफ द इम्प्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। तो इशू ये है कि अगर आपको एम्पावर करना है, इंस्पायर करना है, तो लुक एट द वेरियस मॉडल अडॉप्टेड बाय द वेरियस कंट्रीज। इंडिया इज कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री। आई एम वेरी वेरी एग्री विद दिस अश्विनी कि you don't need to be America, you don't need to be Russia, don't need to be chrono capitalist, you don't need to be a socialist. You need to find out some sort of the hybrid model. So I don't know whether people are putting a thought on this or not, but my clear thinking and as far as my experience is clear from the 15 to 20 years of corporate and whatever in experience I have reached on a conclusion that India need overall change in this complete system. Or how it going to do it, that is something very the bigger question is that हम लोग बड़ा पिक्चर देखते नहीं है. We don't see the big picture. The big picture is that we are talking about ये कर दे, ये वो कर दे, यहाँ fix कर दे, वो fix कर दे. We need to create complete new system. We need to build a system from the scratch. और वो हो सकता है. It's not a big deal. अगर आप में पॉलिटिकल विल हो तो आप कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो कहाँ में वो मॉडल मेरा खुद का मॉडल या मैंने जो सोचा है वो बना के आपको बता दूं, तो ये सही जगह भी नहीं है और सही स्पेस भी नहीं है. जहां मुझे बोलना था मैं बोल चुका. लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली दो चीजें मिसिंग है. अगर हमको आगे बढ़ना है एज ए कंट्री, ऐसे कंट्री हमको सर्वाइव भी करनी है और हमको आगे बढ़ना है, तो हमारा यंग फोर्स है उसको एम्पावर करना पड़ेगा. ऐसे वो नहीं जो सरकार कह रही है ऐसे एम्पावर कर रहे हैं कि आपके स्टार्टअप को देंगे और हम यूनिकॉर्न अगर 4-5 साल में मर जाते हैं. आपको you need to make sure they will get the access. They will get the access of money. They will get the access of the resources. They will get the everything whatever they want to do. Then they will make it big. If you don't do it, these states will Dhanna state will loot you. They will do what they will loot the banks. They will loot every institution and they will go away. You can't do anything. This is the bottom line. Can you do one thing? Can you change the topic of this group? Because I have a feeling that we are talking about something completely different, more longer term, nothing related to the market outlook. So, can the host please change the subject line? पिंडर भाई मैं तो मार्केट एक्सपर्ट हूँ नहीं, और यहाँ होता भी तो मैं जवाब नहीं देता यहाँ पर, तो ये चेंज कर सकते हैं. मैं कुछ कल क्या होगा मुझे नहीं पता और कल No, होना भी नहीं चाहिए. can you change the subject line of the तो रिजवान and Sachin can do it. I will not do it. Sachin, Rizwan, if you want to जी change, you can change it. माई क्या yeah, टॉपिक चेंज just करना है? to add to what you said, I have a very controversial suggestion. India's biggest trade partner is the US, is China. Uh, the PLI scheme is catering to Apple, but India's biggest problem is our trade deficit with China, which is $100 billion. How do we reduce that? We can reduce that. Most of the handsets we use in India are Chinese handsets because Chinese handsets are cheap, and Indians, they say they are patriotic, but even after Doklam, the share of Chinese handsets actually went up initially for about 2 quarters. So Indians might say we are patriotic, but they will still use the cheap Chinese toys and the Chinese phones and everything Chinese. I'm not saying Chinese stuff is cheap. There's really good quality stuff, and they do it at a good price.
So we have actually we are building a relationship with US. But in my view, US has never done anything for India that is good. And I'll give you an example. There is something called the General System of Preferences, which is a trade where they give you a certain benefit for textiles and various other imports into Europe and US especially. India was never part of the general system of preferences, but Bangladesh, Sri Lanka, and Pakistan were there a part of the general system of preferences. It's called GSP. And because of that, and now eventually Pakistan got removed because of the terrorist issue, Osama issue. But Bangladesh and Sri Lanka still enjoy the general system of preferences, and some other countries in Africa as well. The point is that we so called have a relationship with the US, and we are a poor country, but we still do not enjoy the benefit of general system of preferences, which actually gives a tax benefit, import tax benefit to countries like Bangladesh and Sri Lanka and others in Africa versus India. So why is US doing? Who is the one who took India to the WTO? It is the US who filed a case against India in the WTO. Fact finder, just let me interject. I So have been I hearing. am a little confused. Now they're talking about increasing the price of the H1B visa by about, I think, 50-60%. That's going to hit the bottom line of IT companies because that's a one time cost, but it's a pretty significant cost, right? And India has not had an ambassador from the US for 2 years. It is probably the biggest country. If you take the top 20 countries in the world, India is one of the biggest, and we don't even have a US ambassador for 2 years. It is easier to get a visa from China to US within a few days versus India to US. So, are we fooling ourselves by being friendly to the US? No, Instead, we wait a minute. should work with China. Fact. Oh, We banned Chinese software products. We banned Chinese companies. We made hell for Xiaomi in India. But we use most of their products. China, every European and US company wants China vendors to diversify. Where are those companies going? They would have come to India, but because we are so unfriendly with them, they have decided to go to Vietnam, Malaysia, Thailand. They are going and setting up manufacturing facilities over there. And Thailand has a free trade agreement with India. So what China can do, the manufacture in Thailand, Vietnam one has a free trade agreement fact. with India. The manufacture in Fact Vietnam, finder. it comes Oh tax man. free into India through Vietnam. Stupid. Fact finder. Instead of Fact that, finder. we should say, आपकी China, आवाज नहीं come, आ रही. put your manufacturing facilities in India. We will treat you well. What will happen? We'll create jobs, Fact and finder. the Chinese people will look at us friendly. Do you know who are the biggest suppliers of tourism in the world? In Europe, it is the Chinese. In Japan, it's the Chinese. Tourism gets so many dollars. Tourism creates so many jobs. India has got such a rich heritage, right? So our entire policy is completely wrong. We need to be friendly with China and say, okay, you know what, we're going to treat you guys specially. You put up a manner, you want everybody wants China plus one, but the Chinese vendor is scared to do something in India because he's not invited to India. So no China guy wants to manufacture. If they start manufacturing Xiaomi handsets in China, in India, they manufacture Oppo, Vivo, our trade deficit will reduce and our jobs will increase and the number of Chinese. You understand? लेकिन आपकी आवाज नहीं जा रही उन तक. Sorry, somebody was saying something. Yeah. So fact find. बोले बोले Fact बोले find. कंटिन्यू. Fact finder. Let's stick to one and then go to the second because you talked of GSP. Now I was on the panel. The Indian economic, the US Indo economic plan. The reason India is not in GSP is nothing to do with friendly. The problem is India has implemented trade barriers that create negative effects on United States commerce. Let's be honest. Look at
eligible duty-free products in India from US. So the problem is you have to meet certain criteria to be GSP. Just because you're part of Quad or you see business, America sees business completely delinked from. The policies that are made are not intertwined. Oh, they are part of Quad, so now they have to get GSP. That's not how it works. It works on mutual understanding of how you're going to let each other trade freely. Now, India has put in a lot of roadblocks. We cannot flip flop, right? Just about 2 hours back, you were talking of why Amazon is not investing in India, why global companies are not coming because India is moving away from bilateral treaties. So that addresses your. No, I agree. We are doing flip flop. I agree with you. Hmm. I'm not disputing that. No, so no, Being flip flop. no. What I'm saying is, so the moment you say why US is not favoring us, it's because we are ourselves chopping our foot. So if because see we especially the Modi government is not clear on its economic. मैं पहले दिन से यही बता रहा हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी है ही ये बीजेपी वालों का आज से नहीं 50 साल से इनके पास इकोनॉमिक विजन है ही नहीं ये राष्ट्र इनके पास खाली कल्चरल विजन है वो भी डिमेंटेड है लेकिन है वही विजन है इनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी इनके पास एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं है भाई तो जीएसपी में आप आओगे कैसे क्योंकि अगर मुझे ऐसा जीएसपी का मतलब क्या है कि भाई हम अग्री करते हैं कि ये हमारे जैसे यूएस के सर्टेन हाई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे यूएस वांट्स फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट एंड इन रिटर्न दे गिव फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट इन सर्टेन एरियाज अगर यूएस इंडिया पुट्स बैरियर्स अब बाद में आप एक्सपेक्ट करोगे कि अभी यूएस ने अपना यानी खाली यूएस बंटवा खोले तो ट्रेड वैसा नहीं होता दूसरा सवाल रहा फोन पे डिपेंडेंसी का ये बार बार लोगों की गलतफहमी इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे असेंबल हो रहे मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट भूल जाओ मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे मेरे नॉलेज तक जो फॉक्सकॉन ने जो डाला है बैंगलोर जहां पे भी सेटअप डाला है वो असेंबली यूनिट है तो okay Bangladesh ko No, Kayan, I completely agree with you that we are only doing assembly in India and it is actually shit. In fact, just to add, there's a very good if you guys want to understand this entire PLI and how stupid it is and why Apple is doing manufacturing, there is a very good results by Dixon Technologies. Dixon does mobile assembly. Look at their results. They give segment by segment results. So you can just divide the EBITDA for mobile business divided by the revenues of mobile, and you will get how much profit does these guys make for assembling phones. They make some 3%. Effectively, what the the PLI scheme is giving 5%. Now, to Apple, your cost of this is 3% because as a vendor you're charging the guy 3%. Government of India is subsidizing you by 5%. So as a result, it makes sense for you to just do the assembling in India because you're getting more. Your cost is 3%. Government is giving you 5%. It's stupid. So those guys are only just going to take advantage of the PLI tax, benefit, and after they're not going. They're not. I don't know whether they're going to do the components business, which what Kayan was talking about, right? So the guys who really can go ahead and come in a big way, in my view, is the Chinese. By the way, China is the second largest supplier of auto components to India. A lot of people don't aware of that. But Gayan, what do you think about encouraging a China relationship with India? see Or if anybody can add to that. ideally no the China relationship would be a very ideal situation for India but the problem for India is two pronged because India's entire geopolitical focus has been Pakistan, and China is never going to not ever going to de-link with Pakistan because they use that as their leverage and arbitrage against everybody in the region, not just India, because their one belt, one road, everything. Pakistan becomes a very vital part. Gwadar, we have to look into a larger context. The problem is, and India cannot completely rely on China as long as China remains the godfather of Pakistan. So why ideally it should, but at this point, aligning with China does not benefit India in any which way. China is devaluing stock for mostly because
it is losing a lot to the other Asian tigers like Vietnam and all in terms of manufacturing. So in medium, okay. Number two, China will never open up their market for. People don't understand China's rise. China's rise didn't happen suddenly because China became very industrious. No, first there was a political purpose. This was in the Cold War era, where Nixon and my favorite Nixon wanted to keep China away from USSR, so they they got into a deal with China. Number two, China had a captive US market. China could produce everything and US could consume. It's like mother cooking all the food and Bhim eating all the food. So there was a Bhim in America who was ready to devour जो भी China बनाते हम ले लेंगे. इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट कौन खरीदेगा, क्योंकि यूएस ने अपना दरवाजा बंद कर दिया. चाइना बाहर का नहीं लाना चाहता क्योंकि उनके पास जो एक्सेस कैपेसिटी है वही वो दुनिया अभी प्रॉब्लम में आ रहा है कि उनके पास, क्योंकि अभी अमेरिका के दरवाजे बंद होने से उनके पास एक्सेस कैपेसिटी, दे आर गोइंग टू ऑफलोड टू इंडिया. तो एक वे चाइना के साथ वन वे रिलेशनशिप बनेगा. इंडिया को खरीदना पड़ेगा, चाइना इंडिया से कुछ नहीं खरीदेगा अदर देन रॉ मटेरियल, जैसे आयरन और या ऐसे कुछ हो. तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा चाइना के साथ रिलेशन बना. अभी ये स्टेज पे 10 साल पहले कोई और बात होती, साथ में मिलके थोड़ा इंडिया उनकी थाली में से गिरा हुआ खाना इंडिया को भी मिल जाता. लेकिन अभी इतना लेट हो गया है, अभी चाइना के साथ कोई रिलेशनशिप बना के इंडिया को फायदा है नुकसान है, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि अभी इसलिए तो डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि चाइना के पास एक्सेस कैपेसिटी. Can I add one thing over here? China has a issue of obviously getting old, right? That clearly is going to be an issue. And it'll hurt them at some point of time. And my point is, what was it? Shucks, I completely forgot right now. I'll come back. Sorry. ओके नहीं तो अभी फिलहाल चलो डेमोग्राफिक तो अलग ही बात है. प्रॉब्लम है चाइना के पास एक्सेस कैपेसिटी बनी पड़ी है, जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज डीलिंग होने से उनके पास एक्सेस पड़ा हुआ है. तो जो आम आदमी यहाँ पे जो जो इकोनॉमिक्स के नहीं है उनको मैं समझाने के लिए बताता हूँ. आपने इतना खाना बना रखा है कि अभी जो आपके मेन गिराहक आते थे उन्होंने आपसे खरीदना कम कर दिया. अभी ये खाने को या तो डिस्काउंट में बांटो या किसी और बकरे को पकड़ के उसको खाना खिलाओ वही प्राइस पे. तो अभी इंडिया ही एक ऐसा तगड़ा बकरा दिखता है जिसको खिला सकते, वो जो हजम कर लेगा. इंडिया के लिए नुकसान है कि बोले आई कैन बकरा कराना बोले भाई स्पेस में. अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ. मैं बॉम्बे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बॉम्बे में बोलते हैं ना बकरा बनाया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ. ऐसे नहीं कि देश को बकरा, मैं चाइना की नजर से देखो तो इट नीड्स अ स्केपगोट. अब या तो उसको कोई ऐसा चीज जिसको खिलाए, उनके एक्सेस प्रोडक्शन कहाँ लोड, क्योंकि दुनिया में इंडिया के अलावा ऐसा कोई कंट्री नहीं जो कैप्टिव मार्केट है. तो इंडिया के लिए चाइना के साथ हाथ जोड़ने का फायदा नहीं है, चाइना को बहुत फायदा. One minute, the stuff is still coming to India. It doesn't make a difference, right? It's coming to India directly or it's coming through Vietnam. That's why our trade deficit is at a record high. It's not going to make a difference. My point is very simple. China is the biggest supplier of FDI in Malaysia, in Vietnam, and in Thailand. In fact, if you look at the FDI breakup for India and ASEAN, and there's a very interesting report done by this lady called Thryn, Thryn, who's a Malaysian economist. She's available on Twitter. She broke up the FDI into two parts. One is fresh FDI, which is where you put in money and put a manufacturing unit, and one is called investment FDI. Example: Total Energy of France comes and buys a stake of Adani Green. That is not Finder, fresh. Let me finish. Can I complete? Let me finish. So I'm saying that we are not getting the fresh manufacturing FDI. What we are getting is stake sale FDI, right? And that is entirely wrong. Like for example, Geo and Facebook putting in $5 billion into Geo, that's just buying stake FDI. That is not creating new businesses. They're not creating new jobs. That's the point I'm trying to make, is that the Chinese guys would happily come here if we gave them a red carpet, happily come here and do what they were doing in Vietnam or in Malaysia or in Thailand. Okay, now let me tell you why Chinese are doing that. Because I don't know if you're on Quora, I've written extensively 2 years back. Chinese, because there are some investments of ours.
Chinese are doing that to bypass US embargo. So if a Chinese person was manufacturing, let's say, shirt in China, is now set up his unit in Vietnam and Malaysia, so that now it looks like it's, but ownership is still Chinese. India does not need that. That's very scary, because you may come indirectly, India may come under US ire. China is trying to bypass US's restrictions by setting up their own 100% own outfits in these locations that you mentioned. So, and I mean, Facebook and Google are completely dealing from manufacturing. So what I'm trying to tell you is, India's at present, India's core competency services sector. Only area जो मैं देख रहा हूँ इंडिया चाइना को बीट कर सकता है सर्विसेज, उसमें भी हेल्थ केयर, क्योंकि चाइना के, जैसे आपने कहा, चाइना की डेमोग्राफी बुढ़े लोग होते जा रहे हैं। इंडिया के पास वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो चाइना को फ्यूचर में काम आएगा और इंडिया को उससे फायदा होगा। इंडिया ने मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल सपोर्ट हेल्थ, ये सब में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये जो मोदी नहीं कर रहा है। ये और ये रघुराम राजन जी ने भी कहा, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्विस अभी फिलहाल। तो यहाँ से फिर फिजियोथेरेपी, चाइना इंडिया सेट्स अप फिजियोथेरेपी, क्योंकि चाइना को इसकी जरूरत है और चाइना ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। आपने उनकी वैक्सीन क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि चाइना ने कभी भी हेल्थ केयर पे इतना फोकस नहीं किया, फार्मास्यूटिकल पे नहीं। ये कोर कॉम्पिटेंसी है अपनी, जिस पे चाइना को हम डिपेंड करवा सकते हैं, लेकिन क्या मालूम कि मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, बाकी सब में उलझे हुए। आईटी सर्विसेज की मैं बात ही नहीं कर रहा, आईटी में चाइना हमको जाने नहीं देगा, लेकिन एंसिलरी सर्विसेज इन मेडिकल एरिया, एंसिलरी सर्विसेज रिले, मेडिकल सप्लाई चेन तो बहुत बड़ा है। यानी आप उसी में वर्टिकल्स इतने हैं और इंडिया के पास एक्टिव, तो इंडिया में जैसे एक जमाने में जब हमारे जनरेशन में सबको आईटी में जाना चाहिए, अभी इंडिया में हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना जैसे देश से वो हमारे चाइना जैसे देश से वहां से हम फायदा उठा सकते हैं कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां जाके या तो इंडिया से या तो वहां जाके हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। चाइना के पास वो है नहीं, और जैसे जैसे लोग वृद्ध होते जाते हैं उनको ये इन सब की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो इंडिया वहां से, लेकिन है नहीं। कौन सा, आप बताइए कितने नर्सिंग स्कूल्स खोले हैं? तो ये तो इन लोग चल रहे गोमूत्र बेस्ड यूनिवर्सिटीज खोलने, मुझे डर वो लग रहा है रिवर्स जा रहे हैं। तो जो डिमांड हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए 5-10 years फ्रॉम नाउ, उसमें तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज कमाना है तो सबसे आपके पड़ोस में ही चाइना है, लोगों को चाइनीज बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज डाल दो कोर्स करिकुलम में, ताकि चाइना में जाके सारे, जैसे हमारे बहुत पहले डॉक्टर चिटनिस या कोई गए थे, फिल्म भी बनी है, वैसे इंडिया जाके, मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लो, इंडिया का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अपने यहाँ के जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेज, थेरेपिस्ट, ये सब चाइना को जरूरत पड़ेगी, तभी हम चाइना से हम अपना पाउंड ऑफ फ्लेश वसूल कर सकते हैं। बाकी फिलहाल तो चाइना, और ऑफ कोर्स क्योंकि पहले इन लोग आयन और, जैसे आप कर्नाटक और वहां से आए, बेलारी से सब आयन और ले लिया, हमको खराब कर, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर, लेकिन इसमें किसी का एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। इंडिया के लिए जैसे आईटी अमेरिका ने अब्जॉर्ब किया था, वैसे चाइना मेडिकल और हेल्थ केयर हमारा सर्विसेज अब्जॉर्ब करेगा, हमारे लिए बहुत फायदे वाला हो। अभी दूसरा सवाल रहा, फैक्ट फाइंडर बोले H1 वीजा अमेरिका को, मैं तो अमेरिका को पिछले 6-7 साल से हम यहाँ ट्रेड डली कि बढ़ाओ, क्योंकि अमेरिका में क्या हो रहा था, H1 या जो भी, ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये इनको ये कटौती होनी थी, क्योंकि मूर्स लॉ के हिसाब से भी देयर इज अ लिमिट टू वेयर अ टेक्नोलॉजी कैन ग्रो। जैसे अगर आप भगवान पे मानते हो, कुदरत पे मानते हो, तो इंसान से और अच्छी चीज अभी तक कुदरत भी नहीं बना पाई। तो टेक्नोलॉजी में भी एक पॉइंट आ जाता है, जैसे कार, अभी कार में 4 व्हील के बाद आप कितना भी डेवलपमेंट करो, आप 5वां व्हील 8वां व्हील नहीं डाल सकते, वो एक लिमिट आता है, फिर आप कंसोल में चेंज करोगे, दरवाजे बदलोगे, वो तो कपड़ा बदलने की बात हुई। वैसे ही टेक्नोलॉजी में एक पॉइंट आता है कि उसके बाद एक आप इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी पिछले 7 साल में आईफोन या कोई भी फोन में देखो इंक्रीमेंटल वैल्यू, अभी तो आईफोन सिर्फ कैमरा इंप्रूव करने में लगा है, सब सारे फोन वाले उससे ज्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा देते नहीं है आप अपग्रेड करने के लिए। सेम हो रहा है टेक्नो, तो ये एक्सेस वेट
यूएस इंडस्ट्रीज क्यों, जो भी प्राइवेट कंपनियां क्यों, तो बराबर इन्होंने रिट्रेंच किया। इसमें कोई जियो पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें प्योर बिजनेस है। आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर कम आएंगे तो आप कम वेटर रखोगे, तो ये सिंपल है। डिमांड कम होगा, आप जो खाना बेच रहे हो, आप समझो सब सब वीगन हो गए और आप बेच रहे हो पूरा नॉनवेज थाली, तो आपके एरिया में कम हो गए, तो आप तो 10 वेटर की जगह पे 2 वेटर पे काम चलाओगे, तो वैसे ही हो रहा है। तो इंडिया को कहाँ एडवांटेज लेना है चाइना से? एक तो हेल्थ केयर है एक्चुअली, दूसरा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट नहीं, एग्रीकल्चरल सर्विसेज है, क्योंकि चाइना ने उसमें काफी किया है, लेकिन हमारे पास उसके लिए मैन पावर है जो चाइना को, तो हमको वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आगे के, लेकिन अभी जो भी अभी 2024 में भी अगर ये आ गए तो समझो ये तो होने वाला नहीं है, और वी लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो अभी फिलहाल तो लग रहा है कि चाइना हमारे पे हावी रहेगा, सब उनके पास जो एक्सेस प्रोडक्शन है सब हमको बेच बेच के उनके लिए हम अच्छे ग्राहक हैं, हमारे लिए उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ये तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, इंडिया चाइना के साथ जाके भी फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया का ट्रेड वाइज कुछ फायदा नहीं है। जियो पॉलिटिकली थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें नुकसान ज्यादा है, क्योंकि चाइना की आंखें ताइवान पे, इंडिया फंस जाएगा, क्योंकि अगर यूएस ताइवान और इसमें आप जो ये स्ट्रैटेजी देखो, चाइना को वो वॉर विन कर मीन कन्वेंशनल वॉर विन करना इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि चाइना का पूरा सप्लाई राउट आता है स्ट्रेट ऑफ मलागा से। अमेरिका का 7th फ्लीट को खाली स्ट्रेट ऑफ मलागा ब्लॉक करेंगे, चाइना की पूरी एनर्जी सप्लाई खलास हो जाएगी। ये वॉर करने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलागा। चलो चलो, आई कैन हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग ज्यादा आगे तक जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो चाइना का बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं, अगर हम हाइडनबर्ग निकल जाओ, मैं बोल रहा हूँ जियो पॉलिटिकल सोचे फ्यूचर। जैसे किसी ने पूछा चाइना से फायदा क्या, मैं यही बोल रहा हूँ, चाइना से यही फायदा है कि हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें जो उनके पास अभी नहीं है, और उन्होंने उसके लिए कोई ग्राउंड वर्क भी नहीं किया, जैसे मेडिकल हेल्थ केयर इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उनके बुढ़े लोग बढ़ते जाएंगे, यानी एजेड लोग बढ़ते जाएंगे, तो उनको ये सब सर्विस की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएंगे? वो इंडिया सप्लाई करेगा, जैसे इंडिया ने आईटी सप्लाई किया था यूएस को, चाइना को सप्लाई करेगा हेल्थ केयर स्टाफ। उनके हॉस्पिटल्स चलाएंगे इंडियन डॉक्टर, उनके हॉस्पिटल्स में सर्विस देंगे इंडियन नर्स, वहाँ पे उनके प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट सब। तो इंडिया चाइना को कब्जा कर सकता है अगर आप दिमाग लगाओ, क्यों चाइना ने ये नजरअंदाज किया था, उनको लगा था भाई सब चंगा सी, उन्होंने ये एरिया, और वैक्सीन से प्रूव हो गया कि चाइना ने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए शी को 2-2, 3-3, 4-4 महीने पूरी कंट्री को बंद करना पड़ रहा एक मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, आप चाइना कितनी बार गए? है। मैं आप नहीं, 2000 पर्सनल, से अगर दो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं चाइना के साथ बिजनेस, आप एक काम करिए, ये किसने सवाल पूछा प्लीज, मैं देख नहीं पा रहा। अपूर्वा, अपूर्वा ने, अपूर्वा। आप अपूर्व यही नाम से, मैं आई निकालो, केएन है लिंक्डइन, मैं मैंड्रिन भी बोल लेता हूँ। तो मैं करीबन 2002 से लेके 2017 नहीं 2016 तक, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ उतनी, मैं इंडिया से ज्यादा चाइना गया हूँ ये 14 सालों में। ठीक। ओके, और मेरे चाइना में बिजनेस भी मैंने, ये मैं खाली घूमने नहीं गया हूँ, चाइना के डेलीगेशन उनकी उनकी इंडस्ट्री देखो, मैं जो इंडस्ट्री में मेरी जानकारी नहीं है, वो इंडस्ट्री में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चाइना जियो पॉलिटिक्स ये एरिया मेरी यानी ये हमारा काम है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल। ये कब जैसे हिंडनबर्ग का है डिप्रेस्ड एसेट या तो ओवर इन्फ्लेटेड एसेट पे इन्वेस्ट करना, वैसे हमारा फोकस रहता है जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करके इन्वेस्ट करना। तो इसलिए मैं इस पे पूरे अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ, जहाँ पे हाँ कौन है? मैं कल निर्भय बोल रहा हूँ। See the kind of arm twisting we should have been doing with the trade deficit. Like China alone has contributed to 64% of trade deficit. Now anything and everything gets dumped into India. We should have been very careful and we should have been very restrictive with China rather than see whatever you may do with the China. The end game is that they will never offer their friendly gesture to you, neither they will become friends with you. That's a reality. China is a expansionist country. It would like to grow territorially, economically. So nobody is, today America and other countries have to think of it. So, and relation with
Pakistan has improved in the recent years when it Can I क्या just हुआ? add one point? Can somebody, are people able to hear me? बोलो. हाँ Yeah, बोलिए. go on. Trouble. Yeah, I think So Karpan that is must have another got. interest of Sorry, China Karpan, you were with the saying something, Pakistan. but I So think they you got want to have a. disconnected. Karpan, can you start again because you said something, but we can't hear you. Oh, sorry. So I will repeat again. I am saying ki the kind of arm twisting China is doing with us, we should have been doing the otherwise. Like our trade deficit alone is 64% with China. Other bloody junks. We should have been very, very restrictive, and that's how we could have done the arm twisting instead of extending our friendly this thing. China will never become your friend, and China has got a mind to expand territorially. Economically, they are a might. There is no doubt in that. They never enjoyed good relation with Pakistan, but the moment Americans lost their grip, they extended their friendly hand. They started supplying arms. They built their roads, and they were worried about their own Muslim population that they should not get friendly and start disturbing Chinese. So they have diverted attention and started helping Pakistan. It's easier helping Pakistan and disturbing us, and they hobnob with each other. Now, for us, there is no choice but to improve our manufacturing, improve our export, and thirdly, be very, very restrictive and ruthless with the Chinese items. Now, how do we achieve this? See, there's nothing like some food item or such essentials without which we cannot live. The government can be harsh. Only thing, there are a lot of businesses which find it's very easy to import things from China, assemble it, or oblique chemicals. They make it for the farm sector, for the medicines. So I mean, the larger machineries, equipments, these things they are required for the infrastructure as well as for the farm sector. So there is a limitation why we are China dependent. But one can go on as to what are the items which we can procure from other countries and be restrictive, and that's how you could do the arm twisting. That they are least interested in fighting. They will inch in our territory. They will never open arms, and they will not have open fight with us. But their infrastructure, their disturbing, they will keep they will be nuisance, and that's how they will bargain, that they will keep pushing their things inside us. So but our aim should be to to reverse the game, and that's how I think we can have a better this thing, rather than what fact finder is saying ki we have a friendly gesture, then things may improve. No, so I disagree with both of you guys, and I'll give you an example. I used to till recently work for a the largest investment bank in China that had an operation in has an operation in India, and the one thing that I observed is that the Chinese would never interfere with India. They would allow us to do whatever we wanted. They would interfere with operations in Singapore, Korea, not Japan, simply because they realized that the Indians are different and they respected us because they said we couldn't understand you guys. So we respect you because you guys are very smart. So I disagree that the Chinese don't respect us. They do respect us. Okay, so that's one thing. The second is
Do you know who were the first initial financiers of all the startups in India? It was the Chinese that were the first initial financiers for most of the startups in India until uh, the Indian government decided, not to go against the Chinese. So and if they were burning capital in India, yes, you could say that they were capitalistic in nature, whatever, fine. But they were funding the startups which were loss making, right? And they were creating jobs. And the moment you remove the Chinese, you removed competition away. So and thirdly, it's about integrating in the supply chain, right? Um, the fact of the matter is that whatever we try, if we have tariff barriers, India has one of the highest tariff barriers in the world, and simply because of that, we are not integrated into the world supply chain. Okay, China has created the largest, Asia Asia Pacific, market. We are out of it, and every other ASEAN country, Asian country is within it. So I'm sorry, I don't agree. I think we should work with the Chinese. And you're saying that we should discourage So their imports. We've discouraged their imports by having tariffs, and we're still importing. Period. So how do we take advantage of that? We need to get them to start manufacturing little by little in India. So that's my uh, view. And secondly, I fact find agree fact about fact find medical. But the fact of the matter is, if you look at the data for education as a percentage of GDP, India is at about 3.5%. Vietnam is at 14% of GDP. And the policy of the government, we've never increased our education to GDP at all. In fact, under the Modi government, it's come down. It's not gone up. It's come down. Bear in mind, our tax to GDP is at the highest level ever. And despite that, our education to the GDP spend is amongst the lowest levels in 15, 20 years. So you have more taxes, but you're spending less on education. That is the big issue. Our biggest strength is our number of. By the way, I am of the view that our population has already peaked out. It's not going to grow. I know there are a lot of people who believe that India's population will keep growing. We have already reached 2.1 as replacement. We are not going to have a growing population, which is why we have just 20 years to become a slightly richer country. If we not do this in the next 20 years, we'll become an old country, and 30 years, and we'll have the same problem as China. The point I'm trying to make is, I think it's time we get the Chinese FDI and the Chinese tourists, who are the biggest source of tourism in the world, to come to India. Period. That's what I think. No, fact finders, see, man-to-man relation is one thing. We are also on personal level with Pakistan also. We are very friendly. We love to, hear their shairi. One-to-one relation with the people is very good. But when you see the government intent, it's not correct. And of course, then there is some other game in case of Pakistan, that the army is much powerful and they butt in. They don't allow the political ambition to see its color. But in case of China also, the intent of the government is the common man doesn't understand. Why do you No, think I Chinese? said I said earlier, we have proof. They were the first financiers of the India startup ecosystem, which requires you to burn money, right? And those startups were getting created in India, right? sorry, fact finder, I So, think I no mean, our fact biggest finder, source, if you look at India, fact India would be finder. like Sri Lanka and Pakistan if not for the Indian IT services sector. Our forex reserves is at $600 billion only because we export IT of about 170, $180 billion a year.
Without IT, we wouldn't have created a lot of jobs in India. Because for every one IT job that is created, there are two other jobs that are created. So there are three jobs created. Why did IT take off in India? It's because the south of India specifically invested in education. The rest of India did not, for whatever historical reasons. The point is, we are not investing in education. And if we don't invest in education, we can't churn out on the services sector. We cannot, we lose our advantage over there, right? And Vietnam is doing at 14% of GDP is on education. We're not doing that. If we have education, we can provide proper tourism services in India, right? Because communication is a very important thing. All of that stuff. So, I mean, if I don't know how many of you guys have gone to Sri Lanka. Sri Lanka might be a poor country. By the way, their per capita is higher than India, but otherwise, if it's a poor country and they are in trouble, but if you go there, people are so civic. They have a very high level of civic sense. Cleanliness is amazing in Sri Lanka. People follow rules. They spend more money on education than we do as a percentage of GDP. So anyway, that's it. I have to say, but I have a Can I? slightly different view. I know it's controversial. I believe we should have a good relationship with China because that's our biggest trade partner, and I don't trust the US. US just takes us for granted. They had a problem. They're supposedly friendly with India, and then they decide to go and supply aircrafts to Pakistan. As far as I'm concerned, they're not depend. We can't depend on them at any point of time. I'd rather deal with a person who's a businessman who's got more business with me, and I try and use him for my benefit. Host Saab, is it okay? Can I come in, host Sachin Saab? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. I wanted to ask one question and then make some general observations about what has been said. Maybe I'll do the latter bit first. This business about how we can turn things around in India. I think India has a major fault line for all the points that have been mentioned about healthcare and tourism and services industry. India's problem with the services sector, I'm sorry, by services I don't mean IT services, I mean hotel, catering, tourism, transport, that kind of services. India and in general public services where it is person to person, where people have to deliver the services. India's major problem, I think, for a long time has been the caste divide. And unless and until we can overcome that by some dramatic, Okay, drastic so means. Rizwan, I will be calling it a day. So I'm guessing that we are pretty much done talking. Ciao, take care. Good night, guys. Yeah. So that is one barrier to doing anything about education and healthcare, in my view. But now a new barrier has been created by the present government, which is we already had one fault line known as the caste divide, the caste barrier, the caste problem, if you like. Now we've added a new barrier, which is the Hindu-Muslim divide and the communal barrier. So it is difficult for India to, unless we overcome these two fault lines and somehow do something dramatic to correct these two fault lines. I see it as being difficult for us to have a genuinely, people up, bottom up development program which will allow everyone to develop in terms of their education, skills, whether it is personal services, healthcare, or manufacturing skills or whatever skill development we want, unless we can learn to work together side by side without worrying about कौन किसका जात क्या है और किस which god he worships, whether he eats left hand or right hand, or whether he eats beef or not eat beef. Unless we get over those barriers and those hang-ups, it won't happen. The reason why Indians have been so successful abroad and not in India in terms of how they do is because they get along. They don't care what the other person eats, what the other person wears. They just get along with the job at hand, which is education or work or whatever it may be. But that is one observation about what the fundamental drawback and the problem is. But I had a bigger question about the PLI. Somebody mentioned production linked incentive. I put out a tweet a long time ago when the PLI was first introduced. I could never understand the logic of PLI and would be grateful if someone more knowledgeable can explain it to me. You see, if at all India needs
to provide subsidy to something, we should do it on the basis of jobs created, not on the basis of how much a factory or a manufacturing unit or a firm can produce and sell. When I looked at the PLI scheme, it appeared to me that for every whatever 100,000 or whatever 1,000 rupees worth of goods that somebody can produce and sell, he will get an incentive for that. That's why it was called production linked incentive. So the incentive acts as a subsidy. But my question has always been, if somebody can manufacture and sell something, why does it need a subsidy? Other than for two purposes. One, it might lower the price of the final product, so therefore more of it might sell. Lower price equals greater sales. Or he will take the subsidy because it is available and give it to himself, the owner of the factory or the shareholders of the factory, and give out a bigger dividend. So either way, I'm not sure what we are subsidizing here. Why are we subsidizing somebody's profits? A good businessman will not come because of the PLI. He will come because India is a good place to manufacture. There's a willing workforce, educated workforce. There is law and order in the country. There is a system of contracts whereby if he agrees to, hire a house or a property or a factory, and the owner of that factory premises reneges on that deal, then he can go to court and get his problem sorted out within a week, or he will get a telephone line quickly, or he will get water connection or gas connection or electricity connection. The billing won't be excessive, whatever. These are the things that a good entrepreneur looks for. Basically, entrepreneurship is nothing more than the skill and knack of bringing together an idea, a manufacturing process, people, and capital together in order to make a product and sell it at a profit. That's what entrepreneurship is. So entrepreneurs don't bother about the incentives. They look at the cost base and the product he's going to make and the profit margin that he might make on the business. And he's willing to forego a bit of losses while he learns the ropes, while he understands the particular environment in which he's working, the particular billing system, the particular gas, electricity supply system that he's working with. But very soon he would like to have a system whereby he can depend on all of these things: a steady workforce, an educated workforce, a disciplined workforce, law and order, good social situation, so that if he brings in expatriate workers, they have good housing, good environment, good playground facilities, whatever it may be. So that is what the government should focus on, rather than give subsidy to a manufacturer. So if a South Korean company sets up a plant in India and starts making, let us say, refrigerators, for which there is a great demand in India, and sells the refrigerator, why give him more money? He's making money, isn't he? He's already making money. So I never understood the economic logic of the production linked incentive. On the other hand, there might be certainly a bigger incentive to say to a small municipality, for example, to say this municipality is important to us because we are going to have a new factory here. They're going to have a major plant coming up in this area. If you have clean roads, well lit roads, if you provide good schools, blah blah, for every child we'll give you 10,000 rupees for every school place that you provide here, because workers are going to come in and work over here. That makes more sense to me rather than a production linked incentive. So I'm just going to ask a question of the people who might know better. Is the production linked incentive completely misplaced, or have I misunderstood something? जी राजेश जी. Hey, thank you, Rizwan. It was a wonderful discussion. And since last 2 days, we all were, those who are market enthusiasts, were discussing on the Hindenburg research analysis impact. जो भी इसका जो रिवर्स इम्पैक्ट अदानी ग्रुप को कहेंगे या फिर अपने भारत के अर्थव्यवस्था पे या आम इन्वेस्टर पे कहेंगे, तो जो हुआ है उसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से हम बात कर रहे हैं. हालांकि हम सभी को मालूम है कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप में जो इरेगुलरिटीज थी, जो कि आक्षेपार्ह थी, वो इरेगुलरिटीज को पब्लिश कर दिया. और वो कहते हैं ना कि खोखलापन. इससे पहले जय ने भी अच्छा एनालिसिस किया है एंड he represented well. And one more,
Karpa sir also there, and one more the fact check guy, I forgot his name. उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. But the thing, I mean, कोर तो उन्होंने बता दिया है, but the basic thing जो डैशबोर्ड पे हमें अदानी ग्रुप में से जो 10 ऐसे स्टॉक्स है जिनके करीबन 2.37 लाख करोड़, मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू जो है वो लॉस में आ गया है. मतलब इतना लॉस हुआ है. मतलब डेफिनेटली वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन ऑल द पॉइंट्स from the do's and don'ts point of view. I mean, the middle gap index for tail group stocks have fallen 12%. How much? 12%. And to, I mean, 16.83 lakh crore from 19.20 lakh crore. That is on a single day, that is on 4th of January. मतलब अकेले 24 जनवरी के दिन 12% से भारी गिरावट होके 16.5, मतलब आप कहोगे तो 17 लाख करोड़ से लेके 19 लाख करोड़ तक का ये नुकसान, मतलब गिरावट हुई है. और हालांकि इस पे हमें ये डैशबोर्ड पे बात करनी चाहिए थी, मतलब कि इनके ये जो 10 ग्रुप ऑफ कंपनीज है अदानी ग्रुप की, जो अदानी ग्रुप में जो 10 सब्सिडरीज कंपनीज हैं उसके बारे में. फिर इसमें फिर अदानी टोटल गैस है, और फिर उसके बाद उनका विल्मर भी है, फिर बहुत सारी, मतलब अदानी ट्रांसमिशन है. अदानी विल्मर का तो मतलब 5% से लोअर सर्किट लिमिट जो उसका जो पर शेयर प्राइस था वो 517 रुपया 517.30 रुपये पे आके रुका. और सबसे सबसे बड़ा लॉस उन्हें अदानी ग्रीन में भी हुआ है. तो ये जो बातें हैं इस पे बेसिकली मतलब ये लॉसेस का आप पे और हम पे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन कॉमन people, all of us. And you know that most of the supporters, I can't say supporter, I don't know what to say them कि उन्हें सपोर्टर समर्थक कहे अदानी के या क्या कहे, बट अगर लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस को भी मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि I was in one discussion, and Rizwan bhai, that fellow asked me, how can you say that I mean Adani made the loss of 2.37 lakh crores. आप बोल भी कैसे सकते हो? मैंने बोला why not. तो उन्होंने कहा कि आई मीन अर्लियर 2007 में जो रिसेशन आया था उस दरमियान जो लेमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच का जो मतलब जो भी घाटा हुआ था, डूब गई थी जिसकी वजह से अमेरिका में. बोला बस यू कांट टॉक अबाउट अमेरिका. ओवरऑल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो हिस्ट्री है अमेरिका की वो बहुत डिफरेंस है. आप अमेरिका के मतलब अमेरिका को हिंदुस्तान से, भारत से कंपेयर कर भी नहीं सकते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में. ये सबसे बड़ी तफावत है कि हम कंपेयर करने जा रहे हैं चाइना से. नॉट एट ऑल. हाउ कैन वी, इनफैक्ट हम जस्ट चाइना से ज्यादा से ज्यादा खरीदने वाले ही हैं, ले रहे हैं. और जो खरीदने का और देने का रेशो है उसमें भारी डिफरेंस है. देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन दैट. देन क्या खोया क्या पाया, ये चीज पे हम मतलब ये चीज पे हमें बात करनी चाहिए कि व्हाट वी अर्न एंड व्हाट वी लॉस्ट. अब मैं भक्त कहूँ समर्थक कहूँ सब एक ही बात है. अपूर्व सर ने ऊपर पे एक ट्वीट चिपकाया है, काफी अच्छा एनालिसिस है. आई वेंट टू दैट थ्रेड. इट ट्रूली बहुत अच्छा एनालिसिस किया है उन्होंने. सीधा मतलब ये आने वाले कल में ये आपत्ति आज हम जो भरोसे वाले उद्योग समूहों की तरफ देख रहे हैं उनके भी पास हो सकती है. बिकॉज देयर इज अ नो प्रॉपर रोड मैप. अपने देश की सरकार के पास ही वो प्रॉपर रोड मैप नहीं है, बिल्कुल नहीं है. किसी अमेरिका में ऐसे थोड़ी हुआ था किसी एक को, जेफ बेजोस को या वो टेस्ला के क्या है वो एलोन मस्क को खड़ा करने के लिए पूरे अमेरिका के पब्लिक को दांव पे लगाया गया था.
इट वाजंट द केस ओवर देयर, लेकिन यहाँ पे वैसे हुआ है। इट हैपेंड इन इंडिया। सिर्फ मतलब पिछले 8 सालों में, लास्ट 7 to 8 years, वी आर जस्ट, आई मीन, वॉचिंग ऑन टीवी, सीएनबीसी पे देखो, कहीं पे भी देखो, सिर्फ अदानी अदानी अदानी। एक बलून बनाया गया, एक बलून बनाया गया। और सीधी बात है कि जो जितने तेजी से ऊपर जाता है, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से उसे नीचे भी आना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम ही भूल गए। फिर वो आपके शेयर मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में भी एप्लीकेबल होता है। दैट इज द कोर फैक्ट एक्चुअली। और मुझे तो उस बंदे ने ये पूछा, वो भक्त समर्थक ने, कि भाई अदानी ने तुम्हें पूछ के मतलब तुम्हें वो कहा था क्या, या तुमसे इंसिस्ट Just किया था कि इस पे excuse इन्वेस्ट me, करो, कमा ले? Rajesh ji. Rajesh ji, What just was the answer? What should I? few seconds I will take. What should the answer, Sachin bhai, Jason, should I give over there? Yes, Sachin please. bhai, Yes, just please. try Yes, please. getting Yash. Sorry Rajesh ji, disturbing you. Sachin bhai, मेरे को listener पे डाल to say whether I will move out. और यश आए हुए, please invite him here. Thank you. यस राजेश जी कंटिन्यू करिए। ये जिसको लिसनर पे जाना रहता है खुद से माइक छोड़कर जा सकते बहुत आराम से। जी राजेश जी। Can you speak, Rizwan sir? हाँ ओके, कंटिन्यू राजेश जी, कंटिन्यू। Hello. Hello. जी आ रही, आवाज आ रही, राजेश जी कंटिन्यू करें। Am I audible? I can't ओके, hear the हाँ person. जी 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 जी, बोले राजेश जी। राजेश जी बोलिए। बोले, आवाज आ रही थी आपकी। मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनका नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। हो सकता है। आशुतोष भाई आप बोलो। जी रिजवान भाई नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी बोलिए आप। राजेश जी पहले खत्म करें। हाँ राजेश जी बोले, आवाज आ रही थी आपकी, बोले। Sir, please continue. I mean, Rizwan sir, actually there is a network glitches at my end, and उसकी वजह से network glitches at my end, sir. हाँ जी कुछ इशू है आपकी तरफ से राजेश जी। आप एक काम करिए, एक बार आप दोबारा से ज्वाइन करिए। आपकी आवाज शायद आपको हम लोग की आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष भाई आप कंटिन्यू करो तब तक। जी शुक्रिया ऋषिकेश भाई। सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई। डिस्कशन खूबसूरत था, लिसनर के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। ऐसी बहुत सारी बातें जो लोगों तक पहुंचती नहीं, या वो पढ़ नहीं पाते या सोच नहीं पाते, वो सब सुनने को मिला। लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्लास की बातें हैं। हमारा देश दो सेगमेंट में बटा हुआ है। जैसे अभी बीच में टॉपिक चेंज करने की बात आई थी, तो हमारे यहाँ टॉपिक चेंज करने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता। कोई भी टॉपिक हो उसमें पहले पॉलिटिक्स प्लस जो भी टॉपिक है, या जो टॉपिक है प्लस पॉलिटिक्स करके खत्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ नया टॉपिक क्रिएट हो जाता है और आप उसे खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने खुद से टॉपिक चेंज कर लिया है, उसमें पॉलिटिक्स प्लस कर लिए, क्योंकि जितना कुछ कहा जा सकता था वो पिछले 3-4 दिन में सब बातें सामने आ गई। फैक्ट्स भी आ गए हैं, कॉज भी आ गए हैं, सुधार शायद नहीं आए, क्योंकि जो जिस तरह के सुधार डिस्कस हुए हैं, उन सुधारों का ही नतीजा हमारे सामने है, गौतम अडानी। देखिए फिलहाल का माहौल ये है, भगवान के भाई बीमार है, भक्त इलाज करने में लगे हुए हैं। अब भगवान के भाई बचेंगे या मरेंगे, ये समय तय करेगा।
हम लोगों ने किया क्या है? हम ही लोग थे 2011, 12, 13 में डिस्कस करते थे पॉलिटिकल करप्शन है, उसने इतने बिलियन खा लिए, इसने इतने मिलियन खा लिए। वो ये डिस्कस नहीं करता था कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, या हम ग्रो नहीं कर रहे। सब कुछ था ना। फिर ऐसा क्या हुआ? मैं कहीं से तो कोई शुरुआत कहीं से तो हुई है, और आपने शुरुआत में बीमारी पकड़ी नहीं। अब जब वो कैंसर हो गई, आप इलाज करने चले हैं, तो आप कीमोथेरेपी कराइए, सर्जरी कराइए, कुछ भी कराइए, अगर वो ब्लड कैंसर है तो आपका मरना तय है। देखिए, मोदी जी की तो फिलोसफी है कि पहले तो वो आपके जूते उतरवाएंगे, फिर आपको टूटी हुई चप्पल पहनाएंगे, फिर कहेंगे 100 मीटर की रेस जीतनी है। अब आप जीतो रेस। करीब अभी 180 लोग हैं स्पेस में, और 250-300 लोग जो हैं वो ऑनलाइन सुन रहे हैं। एक आदमी मुझे कोई भी ये बताए कि भारत में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका करेक्टर क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है? प्लीज, आप सब लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, किसी एक को भी मालूम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। लिविंग प्रैक्टिस से बाहर की हर बात सिरे से बकवास होती है, जो मोदी जी ने की है 9 साल से। और हमारा भी वो बुखार उतर नहीं रहा है, वही नशा हमें भी चढ़ा हुआ है। हम सारे काम लिविंग प्रैक्टिस से बाहर जाके करेंगे। आप उस दौर में अब है ही नहीं, क्योंकि आपके पास रिजर्व के नाम पे कुछ नहीं है। जिस देश के पास अपने लिए अनाज का रिजर्व ना हो, उसे अगली इमरजेंसी के बारे में सोचना चाहिए, चांद पे जाने के बारे में नहीं। चले जाना, जब आपके पास सब रिजर्व हो जाए तो आप चांद पे जा सकते हैं। आपका स्वागत है। भारत सरकार 10 दिन पहले अनाउंस करती है कि गेहूं के रेट बहुत बढ़ गए हैं, पीट के। वो मार्केट में जो है एक अच्छी खासी क्वांटिटी उतारेगी, और लोग खुश हो गए। भारत सरकार के गोडाउन्स में जो अनाज पड़ा है उसमें से 60% सड़ा हुआ है। वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि अपनी स्कीम्स के लिए भी पूरा अनाज उसके पास हो। आर्मी को भी उसे फीड करना पड़ता है, बहुत सारी फोर्सेस को फीड करना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत बहुत सारा दान भी देना पड़ता है। तो जब रोटी समस्या हो जाए तो चांद के ख्वाब छोड़ देने चाहिए। फिलहाल की स्थिति यही है, बाकी सबकी मर्जी है, आप करें। सबने ट्रेड करके देश आसमान पे पहुंचा दिया, एयर पहुंच गया। आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूचर में, जो 3 साल के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आपको रोटी खाने की भी दिक्कत होगी इस देश में। वो प्रॉब्लम है सीड्स की, बीज की, जिनसे आपकी फसल उगती है। यूरिया, पेस्टिसाइड्स, डीएपी, इन सब की दिक्कत तो आपको होने वाली है। वो शुरू हो चुकी है, वो चल रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन बाकी बिना सीड के आप क्या कर लोगे? सरकार अभी 1.5 साल पहले स्कीम लाई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप उसके रिजल्ट जाके देख लो ना। मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, अगर किसी को ये पता हो कि इंडिया में जो ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको हम भी पीते हैं और अपनी फसलों को भी देते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, अल्कलाइन है या एसिडिक है? बहुत आसान होती हैं सर थ्योरम्स, फार इजी। और हमारी जर्नी की विशेषता है, पास्ट हमारी पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज तक हमने थ्योरम्स ही लिखी हैं, उनके प्रैक्टिकल अप्रूवल हमारे पास नहीं है। हम कागज पेपर पे सिद्ध कर देते हैं, जस्ट अप्रूव्ड एंड देन गो अवे। सो प्लीज थोड़ी सी चीजों को समझिए। अडानी जी मरेंगे या बचेंगे, ये इस देश का विषय है, क्योंकि लोगों की पूंजी लगी है, बहुत मेहनत की पूंजी लगी है। पर यह सच नहीं है कि वो सारी पूंजी मेहनत की लगी है। बहुत सारी पूंजी बैंकों से कर्जा लेके लगी है, बहुत सारी काला बाजारी करके लगी है। अब जिसने पहले डाका डाला है, वो कोई उसे लूट के ले जाए और वो भी अपना ढोल पीटने लगे,
तो उससे सिंपैथी करना मूर्खता होती है, खासकर जो समाज सभ्य हो, सोचता हो अपने बारे में, और हम वहीं जुट गए हैं सारे। सरकार कल्प्रिट है, अब टारगेट कीजिए, रोज कीजिए, डेली कीजिए, इस टॉपिक पे डेली बातें कीजिए। पर भाई साहब पहले जूते तो पहनिए, दुनिया के साथ चलना है तो दौड़ना पड़ेगा, कोई पैदल नहीं चलेगा आपके साथ। ये आपकी चॉइस नहीं है कि दुनिया की रेस में आप पैदल चल के जीत लें। अपनी असल दिक्कतों को भी डिस्कस कर लीजिए। कहाँ फुर्सत है हमें कुछ तरक्की करने का, कब सोचते हैं हम लोग, हमने सोचा ही नहीं है अभी। यार अभी 70-75 साल आजाद हुए हैं, गुलाम रहे हैं हम 1000 साल। अभी तो पहले हमें मंदिर बना के, मंदिर खत्म हो गए थे हमारे यहाँ, बहुत शॉर्टेज है। पहले हर कॉलोनी में 10-10 मंदिर बन जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिस समाज को इतनी फिक्र नहीं है कि तुम्हारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट तुम्हारा कितना बड़ा कैपिटल चूस जाते हैं। कोई सिस्टम है इस देश में कि कोई पूछ ले कि इतना पैसा जो रिलीजियस सेंटर्स के पास पड़ा है, अरे बुरा वक्त है यार, दान ही दे दो। गरीब आदमी ने ठेकेदारी ली है क्या आपकी? मरेगा भी, कुटेगा भी, पिसेगा भी, और फिर आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज पे वो चलेगा भी। और फिर आप ये भी कहेंगे कि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, आप इनडायरेक्ट में उसको निचोड़ लेते हो और उसके बाद कहते हो कि डायरेक्ट भी दे, कि तुम सारे बेईमान हो, डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हो। सर हमारे यहाँ पॉलिसीज ग्राउंड पे नहीं काम करती, वो मतलब ही नहीं है, वो आती नहीं है ग्राउंड तक, वो हवा में तैरती है, खत्म हो जाती है। जो पैसा उनके साथ चिपक के आता है उसको कुछ ब्यूरोक्रेट जेब में डाल के चल देते हैं, कुछ पॉलिटिशियन डाल के चल देते हैं। फिर एक छोटा मोटा हिस्सा कहीं बच जाता है, कहीं चिपक जाता है कोई एक आध नोट, तो वो रिलीजियस सेंटर आ जाते हैं, वो उनमें बढ़ जाता है। तो जिस देश के लोगों को यही नहीं पता कि तुम्हारा पीने का पानी एल्कलाइन है या एसिडिक है, वो चांद की रेस में चले हैं। सर प्लीज, बातें कड़वी हैं पर कहनी पड़ती हैं। हमारा टॉपिक था केवल जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट थी और अडानी ने क्या किया। इसके बाद हमने सब कुछ कर दिया। चाइना ये कर सकता है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। पहले ग्राउंड पे जो माइक्रो काम होने हैं, जो छोटे काम होने हैं, उनको कर लीजिए। आपकी चप्पलें टूटी हुई हैं, पहले जूते पहनिए और उनके साथ पहले प्रैक्टिस कीजिए दौड़ने की, तब आप किसी रेस में आएंगे। धन्यवाद रिजवान भाई, आपने समय दिया बोलने के लिए। थोड़ा कड़वा बोला, सभी से माफी चाहता हूँ, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई अश्वनी भाई, कोई बात नहीं है। देखिए जब चर्चा होती है तो थोड़ी बहुत बात इधर उधर और सब तरह की, और कड़वे और उसकी बात नहीं है, सत्य सत्य होता है। जी अंजनी, आई कैन माइक ले लें। रिजवान भाई, क्या आपने मुझे संबोधित किया? जी जी हाँ, बोले अंजनी। और थैंक स्पेस अंजनी, ये वाला स्पेस राजनीतिक नहीं चलाते हैं, तो हम कांग्रेस सपोर्टर ऐसे होकर हम लोग नहीं बैठते हैं, जो सच बात होती है उसके लिए बैठते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रिजवान भाई, मैं बस क्लियर कर दें क्योंकि कई लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐसा। तो मैं तो आशुतोष भाई और कुछ लोग इसके पहले भी स्पीकर थे, उनकी ही बात आगे बढ़ाऊंगा कि हमको हमेशा डाइवर्ट किया जाता है असली मुद्दे से, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। जैसे आशुतोष भाई ने कही कि मंदिर बनाना है और पठान देखनी है, ये सारी चीज़ें
जैसे वो एक हम इतिहास में पढ़ते हैं ना कि वो रोम का जो एम्परर था नीरो, उसकी जब हालत खराब थी तो उसने लोगों के लिए तमाशा करना शुरू किया, वो लोगों को लड़वाना शुरू किया बड़े बड़े ग्लैडिएटर रिंग्स में। तो वही हमारा हाल भी है कि हमें हमें हमेशा असली मुद्दे जो होते हैं, असली मुद्दों से हटा के डाइवर्ट किया जाता है ताकि ये सारा खेल चल सके। असली मुद्दे क्या हैं हमारे, ये हम सबको मालूम है। हमारे देश में इनइक्वालिटी है, असमानता है, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे। उसकी बात नहीं होगी। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बहुत कमी है, उसकी बात नहीं होगी। अभी शायद कोई कह रहे थे कि ये सारे जो ट्रेडर्स जो अपूर्व भारद्वाज ने ऊपर लगाया हुआ है एक, कि ये सेठ साहूकार अडानी साहब हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे कोई भी हो, खरीदने बेचने से ही वो देश की समृद्धि नहीं आती। ये ज़रूरी है, बिल्कुल इकोनॉमिक अंग होना चाहिए, हमारी अच्छी ट्रेडिंग होनी चाहिए, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, लेकिन देश की वैल्यू तभी बनती है। कोई भी देश हो जिसने आज तक प्रोग्रेस किया हो, आप किसी भी एक भी देश का एग्जांपल उठा के देख लो, जब तक उसने साइंटिफिक प्रोग्रेस, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग ना किया हो, डिज़ाइन ना किया हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ा है। आप तमाम देशों के एग्जाम्पल देख लें, कोरिया से लेके जापान से लेके थाईलैंड, मलेशिया, सारे देश मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहे हैं, ऐसे ही ये आगे बढ़े। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारा जो, मैं तो कहता हूँ कि ये मतलब जो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, खासकर, सॉरी टू से अगेन, बट गुजराती बंडियों की, इन्होंने पूरा ये एक मोडस ऑपरेंडी बना रखा है कि भाई बाहर से माल लाओ, इंडिया में बेचो। अडानी साहब भी यही कर रहे हैं। उनका पोर्ट का मेन मकसद जो मुंद्रा पोर्ट का था, वो बाहर से कोयला लाना है वहाँ पे, और कोयला को फिर इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है हमारे देश में, जबकि हमारे देश में सबसे आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है, उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। वहाँ बाहर से कोल मंगा रहे हैं डॉलर खर्च करके, और फिर उससे पावर बना के हमारे देश में बेचा जा रहा है। हर चीज़ तो मतलब आप ना, बाथरूम का बेसिन से लेके ऑटो पार्ट से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सारी चीज़ चाइना से आ रही। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतनी चाइना से टेंशन होने के बावजूद भी। और इसकी मूल कारण, अगेन मैं रिजवान भाई आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये हमारे से सामाजिक भेदभाव की जो हमारी जो कल्चर रहा है ना, कि जो काम करने वाला बंदा है उसका मजाक उड़ाओ, और जो बैठ के पोथी पढ़ के बही खाता लेके बैठा है या मंत्रोच्चारण कर रहा है उसको ज़्यादा तवज्जो दो। जो असली मेहनत करने वाला बंदा है ना, उसकी हमारे समाज में हमारी दुर्भाग्य रहा है कि उसका हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं, उसको नीची निगाह से देखा जाता है। नहीं तो आज हमारे पास भी लुई वुइटन जैसे ना, हमने मोचियों का मजाक उड़ाया तो हमारे पास लुई वुइटन जैसी कंपनियां नहीं है। सीमा बहन, आप हंस रही हो, आपको लगता है कि ये मतलब, मुझे मालूम है आप मेरी बात का विरोध कर सकते हैं कि बोले आपको, आप बोले आप बोले आप कंटिन्यू बोले, किसी पे न जाए, आप बोले। नहीं, एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीमा बहन जैसे लोगों का, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये जात पात पुरानी चीज हो गई और इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका स्वरूप बदल गया है, ये हमारे मन में आज भी है, और ये कहीं ना कहीं हमें हमें खाता है। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, अगर कोई बंदा मैनेजर बन जाए ना, और वो अगर खुद से प्रोग्राम लिखना शुरू कर दे, तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि तू क्यों लिख रहा है प्रोग्राम, ये तो उसका काम है नीचे वाले का। जबकि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का इतना बड़ा सीईओ, वो खुद बैठ के कोड लिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट जब वो चेयरमैन बन गए थे, उनका रोज का काम नहीं था सीईओ कोड लिखना, वो बैठ के कोड रिव्यू कराते थे इंजीनियर से, एक एक चीज की खामियां निकालते, तो उनको एक एक चीज की पकड़ थी। तो ये जो चीजें है ना, काम करने से ही होती है। कोई भी इंजीनियर ना इंजीनियर नहीं बनता जब तक वो करेगा नहीं। वो अगर मैनेजर या बाबू बन के डीएम अफसर बना रहेगा ना, तो वो कभी नहीं सक्सेस कर पाएगा। वो सिर्फ राजनीति, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, एचआर टाइप के काम कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। मार्केटिंग में भी बहुत हुनर है, लेकिन जो काम हाथ से करने वाली है ना, जो जिसको लोग कहते हैं ना कमेरा जातियाँ, उनकी वैल्यू बहुत कम है इस देश में। डिग्निटी ऑफ लेबर है ही नहीं, उसका मजाक उड़ाना मतलब फक्र की बात समझी जाती है।
और ये नहीं कह रहा कि मैं सारे लोग ऐसे हैं, बट जो लोग करना भी चाहते हैं ना तो फिर वो करते नहीं है इसी डर से कि लोग उनका मतलब एक सामाजिक, यार तू तो ऐसा काम कर रहा है, मतलब ये काम तो उनका है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। और हमने अडानी साहब और अंबानी साहब सबको अपना बना लिया है हीरो, नेशनल हीरो। अब इन नेशनल हीरोज के देखे कि ये गली के कुत्ते हैं और शेर बन के बैठे हैं नहीं हर नहीं 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 भाई 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 भाई, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा शब्दावली में ध्यान दीजिएगा। अंजनी, हम सॉरी, माफी चाहते हैं, हम अपने स्पेस में शब्दावली पे बहुत ध्यान देंगे भाई। आप शब्द चुनो, बहुत से शब्द हैं ऐसे, उनको चुनो, अच्छे शब्द चुनो, गलत शब्द एक भी नहीं भाई। ठीक है रिजवान भाई, मैं माफी चाहूंगा, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि हम अपने घर में तो सभी आदमी शेर ही होते हैं, असली हमारी परख होती है बिजनेस की, कंपनी की या टेक्नोलॉजी की, जब हम वर्ल्ड मार्केट पे compete करते हैं। और ये कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ ये पॉइंट आउट करने वाले, ये बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया इस बात को कि हमारे बिजनेस हाउसेस को हमको तभी मानना चाहिए कि वो वाकई केपेबल है अगर वो वर्ल्ड लेवल पे compete कर रहे हो दूसरे कंपनियों के साथ। ये नहीं कि अपने इंडिया में ही फेमस बने हुए हैं, जहां उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से एक तरह से मोनोपोली हो गई है उनकी कि उन्हीं को मिलेगा काम। तो अडानी साहब ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, जो भी कह ले, किसने भी उनको प्रोटेक्ट किया, और वो पावर में घुसे हुए हैं, ट्रांसमिशन में घुसे हुए, पोर्ट्स में घुसे हुए, सारे ठेके उन्होंने ले रखे हैं। पर एक आध दो ठेका चाइना में भी लेके दिखाएं और मैक्सिको में भी लेके दिखाएं या जापान में भी लेके दिखाएं तो बिल्कुल हम मानेंगे कि अडानी साहब है। और हम तो चाहते हैं कि अडानी साहब फेल ना हो, क्योंकि ये भारत की गौरव की बात है। लेकिन यही है ना कि फिर तो वही बात हुई कि ये सारे रणजी प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। हमें इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। और ऐसी नहीं कि हमारे देश में कंपनियां नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। लार्सन ट्यूब्रो है, वो बाहर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लेती है। तमाम कंपनियां हैं जो बाहर प्रोजेक्ट्स करती है और सक्सेसफुली करती है। लोग इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह को बुरा नाम देते हैं कई बार कि ये तो लो ग्रेड का काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अमेरिकन मार्केट में compete कर रहे हैं, वहाँ से डॉलर लेके आ रहे हैं और जिससे देश चल रहा है। तो किसी न किसी लेवल पे compete कर रहे हैं और वो ज़रूरी है इंटरनेशनल कंपटीशन। तभी हम मतलब सही मायने में अपनी अपनी बिजनेस को हम एफिशिएंट बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। अगर हम हमारा मतलब बजाज साहब का स्कूटर इतने सालों से कभी इम्प्रूव हुआ क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आती थी कि वो इतना धुआं, काला धुआं क्यों छोड़ता था। क्योंकि बजाज साहब का स्कूटर इंडिया में ही बिकता था, बाहर तो बिकता नहीं था। जब फिर बाहर से उनकी टेक्नोलॉजी आई, वहाँ से जापान से आई और कोलैबोरेशन हुआ, तब उन्होंने सीखा। वो चलिए ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। पैसे की कमी तो नहीं बजाज साहब के पास, ना अडानी साहब के पास है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अरे ऐसी क्या अंजनी, एलएमएल वेस्पा जो है लोहिया ग्रुप का था, जो कानपुर में बनता था। एलएमएल कानपुर की कंपनी है, बहुत टॉप पे एलएमएल वेस्पा बजाज को टक्कर दिया था अपने वक्त पे। वो फेल, जी जब फ्रीडम के जो फ्रीडम बाइक उन्होंने उतारी और उसके 12 कलर उतारे, बस वहां से वो फेल हो गया ग्रुप। पर रिजवान भाई, आप खुद ही बताइए ना कि ऐसी कौन सी हमारी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। हजारों लाखों करोड़ है अडानी साहब के पास, अंबानी साहब के पास, पर पेटेंट एक भी नहीं है, ब्रांड होंगे एक भी नहीं है। वो पहले 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 पेटेंट जो है अमेरिका करा के रख लिया है बहुत सी चीजों का, तो इसलिए नहीं हो पाते। अब ऐसी पहले बात नहीं है पहले रिजवान साहब, ऐसी बात नहीं है। कोरिया भी टक्कर दे रहा है अमेरिका को। कोरिया की हालत हमारे देश की जैसे थी आज से 70 साल पहले। चाइना भी टक्कर दे रहा है। सारी चीज़ें चाइना कोरिया में बन रही है, जापान में बन रही हैं। हर छोटी छोटी कंट्री में टेक्नोलॉजी बन रही आ रही। हाँ, अमेरिका सबसे बड़ा है, पर हमारे देश में ऐसी क्या कमी है? ये मेरे दोस्त कहते हैं, मैं IIM से पढ़ा, लोग लाला कंपनी में जाने से कतराते थे, कहते थे कि ये लाला कंपनी वो लाला कंपनी के टाइप से चला होगा। अगेन मैं जाति सूचक देखो शब्द यूज अंजनी, कर रहा हूँ। अंजनी, हर वो देश फेल हुआ है जो धर्म को आगे करके पीछे चला है।
हर वो देश, गल्फ कंट्री देखें, पहले एक टाइम था वो भी बहुत पीछे थे, मगर अब दुबई, यूएई, कतर, ओमान, ये सब जो है ना, धर्म है वहाँ इस्लाम, मगर वो अपने डेवलपमेंट को आगे रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो लोग बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है वर्तमान में कि हम लोग धर्म को आगे कर रहे हैं, बाकी उसके पीछे चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी जितने देश हैं उन्होंने भी यही किया, आज वो सब बर्बाद हो चुके हैं। तो जिस देश में धर्म को आगे लेकर चलोगे, धर्म आस्था का है, वो अपने घर के लिए है, सबके घर के लिए है। सब अपने अपने धर्म में अच्छा माने, अपने धर्म के पक्के होना चाहिए। ये नहीं कि आज ये धर्म में कल वो धर्म में, नहीं। जिसमें पैदा हुए, जब आप उसके नहीं हो तो दूसरे पे जाकर कहाँ से हो जाओगे। तो इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह माने और घर में माने। चलिए, अच्छा हुआ रिजवान भाई, मैं बस अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आखिर में यही कहूंगा, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया यूएई का। अभी किसी और स्पेस में बात हो रही थी कि हमारे भारत में जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जितना हमारा एक्सपोर्ट है उससे कहीं ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है, और वो इंपोर्ट हमें मतलब बाहर की करेंसी डॉलर्स में करने पड़ते हैं, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा घाटा ट्रेड डेफिसिट का है। और उसकी जो भरपाई हो रही है, हम पाकिस्तान की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बाहर से बहुत सारे डॉलर जो हमारे एनआरआई भाई है वो भेज रहे हैं। और मैं उन एनआरआई भाइयों में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो है वो यूएस और यूएई का है। मैं लोगों को याद दिला दूं, करीब करीब $90 बिलियन हमारी फॉरेन से रेमिटेंस आ रही है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रही है। और इसमें ऐसा नहीं कि जो फॉरेन में जो डॉक्टर और इंजीनियर बैठे हैं वो सिर्फ वही है जो यूएस में बैठे हैं। सबसे यूएस के लगभग उतना ही सबसे ज़्यादा यूएई में भी हैं। और वहाँ यूएई में वर्किंग क्लास है, जो हमारी लेबर क्लास है, उनके मेहनत से छोटे छोटे लोगों ने अपनी जो फैमिली चलाने के लिए गए हैं, दुबई गए हैं या शारजा गए हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। और उसके बाद जो 3-4 टॉप कंट्रीज़ हैं वो हैं कतर और सऊदी अरब और बहरीन, ये सारी। तो ये हम चला रहे हैं देश, ये हम इन मजदूरों, इन लेबर क्लास के लोगों की वजह से चल रहा है। डॉलर आ रहा है देश में, जिससे अंबानी साहब कोयला खरीद के इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर लूट रहे हैं हमें। तो ये बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर फाइनली चला कौन रहा है इस देश को। थैंक यू रिजवान भाई। जी शुक्रिया, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो वही हम लोग चर्चा करते हैं, मगर थोड़ा संजीनी रोके, उसके लिए हम माफी चाहते कि रोके, मगर गलत शब्द के लिए हम इजाजत नहीं देते हैं जितनी देर हम रहेंगे। बाकी हम ना हो और किसी भी स्पेस में आप लोग कैसे बात करो, हम, मगर जब तक है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। बहुत से शब्द हैं, बीबी को हत्यारिन भी कह दोगे तो वो शायद झाड़ू और पोछे से आपको सही कर दें, और कातिल कहोगे जब सच सच और समझ कर आपके सामने आए, कातिल कह के देखना खुश हो जाएगी, हत्यारिन कह के देखना पिट जाओगे। जी आसिफ बोले। शुक्रिया रिजवान भाई, शुक्रिया सचिन भाई। देखिए भी मैं एक अंजनी सर की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने बोला कि हमारे देश में संसाधन नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी आएगी पढ़ लिख कर, ठीक है। जब देश का सिस्टम असल मुद्दों से भटक कर ऐसे मुद्दों पर आ जाए जो भावनाओं से जुड़े हों, धर्म से और जाति से जुड़े हों, तो ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। आपने कहा एनआरआई भाई हमारे बाहर हैं, वहां से डॉलर भेजते हैं। अब एक बात बताइए सर, जब एनआरआई हैं वहां पर, तो पढ़कर, जैसे आप संस्था से पढ़े ना, आईआईटी कानपुर से, आईआईएम से, तो ये सरकारी लाई होगी ना। जब इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो लोग टेक्नोलॉजी में जाएंगे ना। अब आप देख लीजिए एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं और कहाँ हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं देश के। यहाँ पर खर्चा ज्यादा आता है, वहां खर्चा कम होता है। हम खुश हो जाते हैं कि हम उसे उस देश से ले आए जहाँ पर आपत आई हुई है, जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त सीटें नहीं थी, वो इसलिए वहां गए थे। लोग रसिया जाते हैं एमबीबीएस करने, चाइना जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम भी है ना। सिस्टम अगर काम करेगा तो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बनेंगे, एम्स जैसे हॉस्पिटल बनेंगे, आईएम जैसे इंस्टीट्यूट बनेंगे, डीआरडीओ जैसी संस्थाएं बनेंगी, इसरो जैसी संस्थाएं बनेंगी, आईजीआई जैसे एयरपोर्ट बनेंगे।
जब सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर क्या बनेगा? जब कुछ नहीं बनेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? या तो मजदूरी करने गल्फ कंट्रीज में जाएंगे या फिर यूएस, कनाडा, यूके जाएंगे वो लोग जो इन संस्थानों से पढ़कर एक अच्छी काबिलियत हासिल कर चुके हैं। अमेरिका में हर तीसरा डॉक्टर भारतीय मूल का होता है और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके सीईओ ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे। एक दो के अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे। हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है सर, काबिलियत लोगों को परखने वालों की कमी है। और सिस्टम अगर आए ना, अगर इंडिया में सिस्टम सही तरीके से चले तो ये कंपनियां भारत में आएंगी और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहता। देश तो वही छोड़ना चाहते हैं मेरे हिसाब से जिन्हें वीजा स्कोर की चिंता होती है ना, अपने देश की नागरिकता वही छोड़ देते हैं। देखते हैं कि इस कंट्री की ज्यादा वीजा स्कोर है तो यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। वरना हर देश प्रेमी देश छोड़ना नहीं चाहता। घर जा यहाँ से अपना घर छोड़ कोई जाना नहीं चाहता। 8-10 साल में देश की स्थिति ऐसी हो गई है, कुछ कमाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ सेटल होने के लिए भाग रहे हैं। आंकड़े भी हैं, गृह मंत्रालय ने भी दिए थे कितने लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। तो सिस्टम की कमी है, सिस्टम की लोग हमारे लोगों में कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। काबिलियत की कोई कमी नहीं है, परखने वालों की कमी है, संसाधनों की कमी है। दोष दिया जाता है जनसंख्या को। हमसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश की है और हम डिपेंड हैं। आप अगर हम चाहें ना कि हम उनके पड़ोसी देशों के सामान नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनकी इकोनॉमी पे चोट करेंगे, सर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट तो सबसे बड़ी इंडिया है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है ना। बड़े से बड़े छोटे छोटे चीज के लिए हमें चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कारोबार को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, बढ़ावा नहीं मिल रहा। जितनी जरूरत गरीब आदमी को आगे लाने की है ना, इतने बिजनेसमैन को हेल्प करने की भी है। टैक्सेस में, सिस्टम में सुधार होगा तो सब चीजें चेंज होंगी। कहीं ना कहीं सिस्टम का ही खामियां चल रही हैं जो देश के लोग परेशान हैं। शुक्रिया। हेलो, क्या कहते हैं आसिफ, एक बात बोले। जो जी क्या कहते हैं, जो ये 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना 81 करोड़ को हर महीने, ठीक है, एक जिले में कम से कम कई करोड़ रुपए तो खर्चा आते होंगे। क्योंकि जन आप कानपुर, प्रॉपर कानपुर की अगर देखें तो आबादी के हिसाब से कम जो है 50 लाख 60 लाख के आसपास है, ठीक है। और जो कानपुर देहात का जोड़ लें तो और ज्यादा हो जाएगी, 1 करोड़ के करीब पहुंचेगी। देखिए यजमान भाई, ये क्या सर, सुनो तो मेरी बात तो हो जाए, मेरी बात तो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। फ्री में अनाज देने से सरकारें जो है ना गुलाम बना रही हैं आने वाले वक्त के लिए। एक स्मॉल फैक्ट्री लगा देंगे ना, उसमें 1000-2000 लोग जब उस पर जॉब करेंगे तो उनके परिवार को ऐसा नहीं है कि उनको और चीज भी जरूरत होती, खाली 5 किलो अनाज नहीं है। उससे प्रोटेक्शन करो, तमाम चीजें हैं। जैसे चाइना में, हम चाइना पे डिपेंड हो गए कि वो एक बाल में लगाने वाली क्लिप भी जो है ना 2 रुपए की, यहाँ पे 2 रुपए की वो मिलती है। अब बताइए वो कितने की तैयार हुई होगी और कितना टैक्स लगा, और यहाँ आकर वो बिक रही है। तो हम फ्री में अनाज न दे के काहिल न बना, उससे बेहतर है कि स्मॉल छोटी छोटी फैक्ट्रियां छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे शहरों में लगाएं, जिससे हम चाइना की तरह और मुल्कों में हम बेच सकते हैं, अपने यहाँ के लोगों को कारोबार दे सकते हैं। मगर नहीं, हमको तो अरबों खरबों रुपए में एक इवेंट कराना है। हर 2 महीने में अपने देश में एक इवेंट होता है सरकार द्वारा अपनी वाहवाही के लिए, उसमें खर्चा बेतहाशा। बुरा ना मानिएगा कोई, पहले भी जैसे रोजा अवतार होता था राष्ट्रपति भवन में, वो बंद हुआ, उसमें खर्चा होता था। अब क्या होता है, अयोध्या में दीप जलते हैं, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। उसके बाद गरीब इंसान उसको दूसरे दिन ना वही ऑयल बोतलों में भरता है खाने के लिए। ये सब इस तरह की चीजों में ना खर्चा करके एक स्मॉल फैक्ट्री लगाना चालू कर दें, और देश की तरक्की की तो चाहिए
तो इस तरह के काम में करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो फ्री का अनाज खाकर काहिल ना हो। जी देखिए रिजवान भाई, आपने राशन की बात की, सर्वे करवा लीजिए, गवर्नमेंट सर्वे करवा ले। आप क्या करेंगे? अब तो हम तो वही है जो है, जनता ही हम तो। गवर्नमेंट सर्वे करवा ले कि लोग 5 किलो राशन पहले लेना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, या उनके लिए नौकरी पहले चाहते हैं। अगर उनसे लोग कहें कि हमें राशन ही पहले चाहिए, तो उनको राशन दे दिया जाए। ठीक है, सियासत जनता पर कुछ ऐसे एहसान कर रही है, आंखें छीन कर उनको चश्मे दान कर रही है। जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो सिर्फ राशन से ही घर नहीं चलता। राशन से सिर्फ चावल मिलते हैं, गेहूं मिलता है, और कभी कभी मिलता है रिफाइंड फोटो के साथ। ठीक है, जो चीज 110 रुपए की बिक रही थी पहले, अगर वो 200 की बिक रही है तो 90 रुपए कम रहे हैं ना। अगर 90 रुपए कम रहे हैं, जो सिलेंडर 400 का मिलता था, अगर वो 1000 का मिल रहा है तो 600 बढ़े हैं ना। तो कितने हो गए? 700 हो गए ना। तो उसी बजट से काट पीट के अगर बोझ डाल के, अगर मैं आपको 10 आइटम सेल करूं और 2 में आपको मैं फ्री दे दूं और 8 में उन्हीं में चीजें बढ़ा दूं, तो आप खुश हो सकते हैं इस चीज को सोच के कि इसने ये चीज मेरे को फ्री दी है। लेकिन उसमें चीज ये है, लाला लोग होते हैं ना, सॉरी लाला हो सकते हैं इस स्पेस में, दुकानदार लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अगर किसी को कैरी बैग भी देते हैं ना, या कुछ सामान भी देते हैं, तो वो उसी का अपने मार्जिन में ही प्लस कर लेते हैं। अपने घर से कोई घाटे का सौदा नहीं करता है। अगर राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन मिल रहा है, तो वो अपने पास से तो कोई नहीं दे रहा, जनता पे जो बोझ डला है ना, वो उसी का वो है। ठीक है, उसी का रिवार्ड मिल रहा है वो, और रिवार्ड कम मिल रहा है, चोट लोगों को ज्यादा मिल रही है। तो मैं तो उपलब्धि नहीं मानता 5 किलो राशन को। 5 किलो राशन खत्म कर दीजिए। जितने बजट बजट होगा ना, जो राशन में बजट खर्च होता है, उसे बंद कर दीजिए बिल्कुल 5 किलो राशन वाले को। आप उस बजट के कॉलेज खोल दीजिए, उस बजट में हॉस्पिटल खोल दीजिए। 543 सीट्स हैं एमपी की, फेज बना लीजिए। फर्स्ट फेज में 100 इतने इसमें यहाँ पे काम होगा, फिर 100 सेकंड फेज में इतने 100 सीटों पे यहाँ पे होगा। जरूरी चलिए, नहीं है राशन आसिफ पे और लोग लोग को टिके ले हुए हैं। लेते हैं, आसिफ और लोग को ले लेते हैं। जी तो जी ये रोला जी है, बस आ रहे हैं तीनों में। रोला जी। जी रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा यार, ये जी अभी जो पहले बात कर रहे थे ना अंजनी जी, ये सही बात कर रहे हैं। एक बात मैं उसमें थोड़ी सी और जोड़ूंगा। जो जितनी भी इवॉल्व सोसाइटीज या इकोनॉमीज हैं, आप देखेंगे वहाँ पर जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं ना, वो एक्चुअली जितना भी टैक्स मनी इकट्ठा होता है वो, और जो चीपर लोन्स के शेप में या सब्सिडीज की शेप में, वो कंज्यूम कर जाते हैं गवर्नमेंट का जो बजट्स होते हैं। आप यूएस देख लें, या फिर आप कोई जो इंडस्ट्रियल नेशन हैं दूसरे, आप वो देख लें। तो ये गवर्नमेंट इन पे चेक रखती है टैक्सेस बढ़ा के, और इतनी आसानी से इनको सब्सिडीज भी नहीं मिलती। लेकिन ये है कि उनको पता होता है इनके पास ना नेगोशिएशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। इनके पास 1 मिलियन 2 मिलियन लोग काम करते हैं। इनको पता होता है कि अगर ये इन्होंने अभी इनको सब्सिडीज नहीं दी या इनको चीपर लोन नहीं दिए, तो हो सकता है मास जॉब लॉसेस हों। इस करके इनकी जो नेगोशिएशन पावर है उसकी वजह से इनको ये लोग थोड़ा चेक में रखते हैं कि भाई इनको पता है पीछे बाद में इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आप बिल्कुल कॉन्ट्रा कर रहे हैं। आप बड़े एंटरप्राइज को उनकी मदद कर रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि जो टैक्स कलेक्शन है मोस्टली वो छोटी जो छोटी अपनी कंपनीज हैं, जो छोटे 1 से लेके जो 20 एम्प्लॉयज वाली कंपनीज हैं, वहां से इकट्ठा होता है मोस्टली, क्योंकि वो लोग, उनको सब्सिडीज भी कम मिलती हैं, उनको चीपर लोन्स भी आसानी से नहीं मिलते। तो वो पूरा टैक्स भी पे करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उस पर टीडीएस भी कटता है, वो भी आपके पास जाता है। बड़ी एंटरप्राइजेस किसी भी कंट्री के अंदर, दे सक ऑल द रिसोर्सेज, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो चीपर लोन्स हो। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने भी इस तरह किया है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इन्होंने तो अडानी को नंबर तीसरा या नंबर दूसरा अमीर आदमी बना दिया पूरे एशिया का, या पता नहीं वर्ल्ड का। तो ये उल्टी गंगा बह रही है, इनको यहाँ पे चेक करना चाहिए। ये और काम खराब आज होगा इससे। 9वें में आ गए हैं रोला, आज 9वें में आ गए हैं। 2 तक गए थे, आज 9वें में आ गए हैं। क्या हुआ जी, क्या बोल रहे हैं? अडानी जी वर्ल्ड में दूसरे नंबर तक पहुंचे थे, मगर आज जो है 9 नंबर पे आ गए हैं। हाँ, तो वो वही ना, आप देखिए ना, या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं,
या तो अपने 4 लोगों को आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे लगा दें, या फिर आप 20 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे है उससे बाहर ले आएं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 लोगों को अरबपति बना दिया, खरबपति बना दिया। इन्होंने 20 करोड़ लोगों को की गरीबी पे ध्यान नहीं दिया, उनको इन्होंने गरीबी से बाहर नहीं निकाला। This also shows the intent and priorities of the government. और वो एक दूसरे भाई बात कर रहे थे कि ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो भाई अगर वो नहीं देंगे तो सिविल वॉर हो जाएगी यार वहाँ पर। वो 14-15 किलो नहीं, लोगों को मिल रहा है, वो 5 वो किलो बात अनाज। सही है, वो सही है, हम कह रहे हैं वो दो, हम मना नहीं है, मगर अगर स्मॉल फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश करो और बहुत सी चीजें हैं वो आप कर सकते हो, बहुत सी चीजें जो जरूरत की नहीं है फिर भी आप वाहवाही के चक्कर पे करते हो। आप बिजली का बिल क्यों पूरा माफ कर रहे हो? बिजली यूज जो कर रहा है जितनी कर रहा है आप उतना लो ना उससे, मगर यार जब वो एक सारे काम, फैक्ट्री लग ये सारे काम तब हो सकते हैं जब ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास मार्केट्स हो, जो फैक्ट्री से आप लगा रहे हैं। जो मार्केट, जो फैक्ट्री लगाएगा वो अपना माल भी तो बेचेगा, कहाँ बेचेगा? जब डिस्ट्रेस हो सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी में, कि भाई लोगों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो बेचेगा कहाँ पे भाई माल? चाइना से, सारे लोग रोलक तो भाई, चाइना से बेतहाशा माल आता है, बहुत आता है, हाँ तो बहुत सी सारे चीजें लोग, हैं। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा इसमें डिस्कनेक्ट है। आप हर चीज बना के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हर कंट्री हर चीज बना के एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना में अब जो फैक्ट्री में माल बन रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बिक रहा है। उसके लिए पीछे आपको पिछले 30-40 नहीं साल हो रहा है देखना यार, पड़ेगा कि अब भाई ने आपको क्या किया बताएं उसके हम लिए। हकीकत, लेदर उद्योग का बता रहे हैं। लेदर उद्योग कानपुर का जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस था, जो सैडलरी होती है, जो जिसको घोड़े की जीन बोलते हैं, जो पूरे दुनिया में जो है कानपुर से जाता था, सबसे बड़ा। उसको बर्बाद किया गया है क्या? एक गंगा सफाई अभियान के चक्कर पे किया क्या है, गंगा सफाई सिटी के अंदर तो उन्होंने सब बंद करा दिया और गंगा 100 किलोमीटर मोड़ कर एक पूरा बनाकर फिर उसी में मिला दिया। तो हुआ कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस को बर्बाद किया गया। सीमा मैम को सुन लेते हैं, उसके बाद अक्स। हाँ जी, मैं शुक्रिया माइक लेने के। मैं अभी बात हो रही थी कि फ्री के राशन के ऊपर बात हो रही थी, तो मुझे तो इस शब्द से ही मतलब आपत्ति है कि कोई बोलता है कि भाई फ्री का राशन बांटा जा रहा है। ये ना तो फ्री का राशन है और ना ही ये कोई भीख में दिया जा रहा है। क्यों 80% लोग इस हालत में आ गए कि सरकार को ये अनाज देना पड़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वही देगा। तो ये फ्री का है नहीं, ये हक का है। और ये जो राइट टू फूड का जो एक्ट है उसके अनुसार ये दिया जा रहा है। ऐसे हालत में एक बड़े पॉपुलेशन 80% लोगों को आपने पहुंचा दिया, जो जितने लोगों को गरीबी रेखा से पिछली सरकारें उठा के ऊपर लाई थी, उससे ज्यादा को इन्होंने वापस उस गड्ढे में ढकेल दिया है। तो फिर ये इनका ड्यूटी बनती है कि उनको भरण पोषण का भी इनके ऊपर ही जिम्मा बनता है, सरकार के ऊपर, नहीं तो और कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो रोजगार के अवसर पैदा करे, लेकिन इन्होंने उल्टा क्या करा है, नोटबंदी करने के बाद इतने बड़ा जो बड़े उद्योग धंधे जितना है ना रोजगार नहीं देते हैं लोगों को, उससे ज्यादा आपको पता होगा, आप डेटा निकाल के देखने, एमएसएमई देता था। एक बड़ी संख्या को जो रोजगार मिल रहा था वो एमएसएमई से मिल रहा था। और नोटबंदी और उसके बाद कोरोना के पीछे ये लोग छुप जाते हैं, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही उसको बर्बाद कर दिया था, एमएसएमई को, जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो सेक्टर था। तो इसलिए ये जो 80% लोगों को जो बांटना पड़ रहा है ना, वो इस हालत में कि वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और इतना निराशा फैल गई है ना कि लोगों ने कितने परसेंट में डाटा नहीं बोल सकती, लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया निराशा के कारण, क्योंकि रोजगार है ही नहीं तो ढूंढना बंद कर दिया, इतनी निराशा है लोगों में। तो फिर और कौन देगा? और ये बोलना बंद कर दिए कि भाई 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है। एक मंत्री भी मंत्री में खड़ा होकर यही बकवास कर रहा था। तो ये कोई फ्री का नहीं है, ये जनता का, जनता को मिल रहा है और ये उसका हक है, ना कि फ्री है। चलिए ठीक है ठीक ना? है, और हम ये हम मेरी कहा सुन, रोजगार पैदा सॉरी। करने की जो काम करना चाहिए सरकार, तो वो तो उसने तो छोटे उद्योग धंधों को बर्बाद कर रहा है, तभी तो एक आदमी अमीर बनता जा रहा है ना। वो कब से राहुल गांधी भी और दूसरे भी जो मतलब एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो बोल रहे हैं भाई पब्लिक की जेब में पैसा डालो। नहीं डाल रहे, अनाज डाल रहे हैं, पैसा डालेंगे तो पैर पे खड़े हो जाएंगे। नहीं चाहते ना कि ये लोग खड़े हों, ये दबे रहे, अनाज से खुश होके वोट देते रहे। तो ये इनकी यही स्कीमें चलती रहेगी, वो नहीं लेना चाहते ना। तो एमएसएमई को जो है इन्होंने तरीके से बर्बाद किया है, उसको खड़ा होना ही नहीं देना चाहते। हम देख ले कितने भी उद्योग धंधे हमारे आसपास
आसपास थे, सबकी यही शिकायत है कि अरे सीमा मैम हम हमारे अपनी धंधे बता रहे हैं बर्बाद अभी हो गए हैं, अपनी सीमा ठीक है मैम जो ना? बात कर रहे हैं हम अपनी हकीकत बता रहे हैं। मेरे यहाँ 13 हाँ लोग जी। थे, आज 4 लोग हैं। वही कह रहे हैं, मेरे वही यहाँ कह रहे हैं, इन्होंने लोगों के उद्योग धंधे चौपट कर दिए हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से अपना गुणगान करते हैं कि हम 80 लोगों को खाना खिला रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपने ऐसे हालत पैदा कर दिए कि आप 80 लोगों को सरकार मतलब खजाने पे जिंदा रहना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि गर्व की बात है? फोटो छपा छपा के आप थैले भिजवाते हैं, नाम लिखा के, अपना मुंह छुपा छुपा लेना चाहिए इनको, और फोटो छपवाते हैं बेशर्मी से। तो ये सब देखने की चीजें हैं, और ये बिल्कुल हमें नहीं कहना चाहिए कि 80% लोगों को मतलब मजबूरी है उनकी, कौन चाहता है? पहले भी राशन से तो मिलता था ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, पहले भी बहुत मिनिमम रेट्स पे राशन की दुकान में अभी भी 2-3 तरह के राशन कार्ड मिलते हैं, कैटेगरी है राशन कार्ड की अलग-अलग, तो उसमें एकदम मामूली रेट पे राशन मुहैया कराया जाता है। तो आप सोचो, इतने लोगों को इन्होंने इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो मिनिमल रेट पे भी नहीं खरीद पा रहे हैं और उनको देना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात पैदा किनने करें? इन्हीं नहीं करे। एक भी ऐसा आप प्रयत्न बता दो, ढूंढ के कोई मुझे इस स्पेस में बैठा है बता दो कि सरकार ने सीमा एमएसएमई को सीमा वापस से खड़ा करने के लिए कोई प्रयत्न किया सीमा हो। बहन अडानी पे ये लोग खुश हो जाते हैं कि भई हमारा एक व्यापारी दुनिया में तीसरे नंबर। अरे उसका हम क्या अचार डालें? उससे ये जो गरीब हुए हैं 80% उस अडानी से इन लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सीमा बहन किसी को मिल रहा होगा, सरकार को मिल रहा है, क्योंकि लेकिन आम आदमी को नहीं मिल रहा है। मैं दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, अडानी का आप निकाल के देख लो कितने लोगों को वो रोजगार दे रहा है, सीमा बहन मेरी बात और सुन लो। कितने लोगों को एमएसएमई सेक्टर रोजगार दे रहा था, और कितने लोगों, ये लोग जो ये राष्ट्रवादी कहते पड़ते हैं ना, छद्म राष्ट्रवादी, कि भाई अडानी तो नौकरी देता है, आप उसके लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो लोग जरा सा निकाल के तो देखे ना कि वो कितने लोगों को नौकरी देता है, कितनी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है सीमा उसने, बहन और कितने लोगों को एमएसएमई जो बर्बाद कर दिए वो रोजगार देता सीमा था। बहन सीमा बता बहन दे कोई। सीमा थैंक सीमा यू। बहन सीमा बहन सीमा बीच में नहीं बीच में नहीं बीच में नहीं बीच में इतना ना बोला करें। अगर कोई बोल रहा रहता है तो बीच में बार बार टोकें। सीमा बहन कौन बोल रहा था कौन बोल रहा था? अच्छा, अदनान भाई, सीमा बहन चक्कर ये है कि इस बात को हम जितना राशन वाली बात को फलानी बात को बोलते रहेंगे ना, वो वाली बातें सीमा बहन दुनिया के समझ में नहीं आएंगी। इस वक्त मुद्दा है, एक फ्रॉड बंदे ने देश के साथ फ्रॉड करके देश की इकोनॉमी को लूट लिया है, वो वाला मुद्दा है। उस देखो मेरी बात सुनो, हर नैरेटिव को सीमा बहन एक तरीके से चलाना होता है। इन लोगों ने नैरेटिव चलाया, देश आगे चल रहा है फलाना ढिमका करके, विश्व गुरु बन रहा है, उसके ऊपर एक नैरेटिव चलाया और अदानी को सारी संपत्ति देश की सौंप दी। आज वो बंदा प्रूफ हो गया है कि वो फ्रॉड है, उसने फ्रॉड किया है। तो हमें जो पुरानी बातें हैं ना सीमा बहन, जो हमें पता है, पुरानी बातें जो चल रही हैं, ये जो 80% राशन देने वाली बातें हैं, फलाना बातें हैं, अगर हम इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो आगे वाला अरे अदनान भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बोल लेना। मैं वो थोड़ा सा बात इस पे हो नहीं रही थी, किसी ने बोला तो मैंने उसका जवाब दिया था कि अडानी कितने, अडानी पे ये बात अडानी पे ही आके खत्म होनी थी, इसलिए मैंने बोला था कि भाई अडानी कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और एमएसएमई कितने लोगों को रोजगार देती थी। अडानी को ही इन्होंने देश समझ लिया और बोलते हैं देश का विकास हो रहा है। अडानी के विकास को देश का विकास समझ लिया है। थैंक यू, आप बोलिए। जो आप बोल रहे हो ना, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और लहजे में बोल रहा हूँ, आप किसी और लहजे में बोल रहे हो। हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बोलने का नजरिया अलग है। आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा था पहले? तो उस बात को समझ के अगर हम पब्लिक के आगे रखने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ कि पब्लिक उस बात को हजम नहीं कर पाएगी, और वो जो हैं इस हेट्रेड की
आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले, वो अदानी को भी भगवान का आने वाले दिनों में देखिए अडानी का भी एक मंदिर बना होगा, उसको भी पूजा करेंगे। लेकिन हमें जो न्यूट्रल बंदे हैं उनको समझाना है। अगर हम उनको भी पुरानी बातों पे समझाने पे लगे होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। हमें आज की हकीकत समझानी है। आज भैया उस बंदे ने एक फ्रॉड करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके देश को लूटा है। तो ये बात अगर हम क्लियरली बता पाएंगे लोगों को, तभी लोगों को, शायद कुछ लोगों को, पूरा नहीं, कुछ लोगों को समझ आ पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये था। थैंक यू जी। हाँ अदनान भाई, एक बात बता दूं, हम ये 5 दिन से स्पेस हो रही है, रोज वो पूरे दिन चलती है और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं जिस पे आप बोल रहे हो, यही इंडरबर्ग रिसर्च के ऊपर ही बात चल रही थी। आप शायद आज जुड़े हैं, पता नहीं। तो रोज यही बात होती है, पूरे दिन रात के 3-3 बजे तक स्पेस चली और डिस्कशन हुए। चले अच्छा। हाँ, यस चले गए। क्या नाम था? चलो और किसी को ले लो। हाँ गोस्वामी बोले। अच्छा गोस्वामी जी। जी धन्यवाद। आप लोग का आज जो टॉपिक है रिजवान भाई जो आपने बनाया है काफ़ी अच्छा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? आ रही है। जी थैंक यू। तो देखिए जो मार्केट आउटलुक एंड स्टॉक मार्केट नेक्स्ट डे है जो हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी का है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए क्या हो चुका है वो तो हमको दिख रहा है। समस्या इस चीज़ का है ना कि एक आम आदमी इन चीज़ों से फाइट कैसे करे, हाउ टू फाइट बैक, है ना, जिसको बोलते हैं बाउंस बैक करना। कि अब सरकार भी भरोसे के लायक नहीं रह गई है और बड़े बिजनेस वाले जिस प्रकार से अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरा जियो बड़े मार्केट पे, है ना, जियोलॉजिकल उसमें, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या हम अन्य लोगों पे भी विश्वास कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस वाले हैं, है ना। कि देखिए बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स रहते हैं और ये लोग कभी रिवील नहीं करते और हमारा पैसा साफ हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तब ये है कि क्या हम बड़े बिजनेस वालों पे पैसा लगाएं सिर्फ इसलिए कि इनकी मार्केट कैप अच्छी है, कि या हम उन छोटे बिजनेस वालों पे पैसा लगाना बेहतर होगा कि जो ग्रो अप कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बड़े भी कर रहे हैं लेकिन तो उस पर प्रायोरिटी देके हम लोग क्या करेंगे, छोटे मीडियम और स्मॉल जो बिजनेस वालों को अगर शेयर्स में भाई 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 खरीद। भाई भाई हेलो भाई सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। आप जो भी बोल रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस वक्त देश बचाने की बात है। कि पैसा बचाने की, किसके ऊपर लगाने की, वो बात नहीं है। वो मैं नहीं उसमें आऊंगा। उसके ऊपर नहीं मैं आओगे आप। आपका मैंने मुद्दा पकड़ लिया। तो सुन लो मेरी बात देखिए भाई, टॉपिक सुन लो। क्या रखता हूँ, ये टॉपिक पे बात करूंगा मैं 10 अदनान भाई, ये अदनान देश भाई, बचाने की अदनान भाई, बात है। गोस्वामी नहीं, गोस्वामी को हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये इनको बोलने दे अदनान भाई। हाँ, मैं क्रम से बोलता हूँ, इधर उधर बहुत अच्छी अच्छी बात रखते हैं। पहले सुनिए। देखिए देश और दुनिया भर का बात ये तो तभी आपको समझ में आएगा ना जब जेब में पैसा सब चीजें रहेगा। जब खुद आदमी बर्बाद हो जाए ना तो देश नहीं पाती। आदमी पहले यही देखता है कि हम कैसे बचे। तो हमको झूठे भ्रम में जीना नहीं चाहिए कि सब अच्छा हो जाएगा, वो कर देगा, कोई नया अवतार आ जाएगा। कुछ नहीं होता। संगठित रूप से जब जनता सजग होती है ना, है ना, क्योंकि सबको भुगतना पड़ेगा, कोई ना कोई, सब अलग अलग रूप से भुगतेंगे, टीचर हो, कोई भी व्यवसाय से हो। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे है ये चीज। आप अमेरिका में और बहुत सारे देशों में देख लीजिए, बहुत एडवांस एडवांस कहते हैं, सब उधारी में चल रहे हैं और लोग विश्वास नहीं कर रहे, मीडियम वाले पे अप्रोच कर रहे हैं। चीन में भी वो भी बीच में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कस के हुआ था, तो भी लोगों ने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पैसा लगाना कम कर दिया। तब ये हालत हो गई है कि अब दूसरा तरीके से, इसलिए दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए जो छोटे मीडियम स्मॉल बिजनेस को, ग्रामीण एरिया को डेवलप किया है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि वो डंपिंग सिस्टम को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए।
और यही कारण है कि वो साथ ही साथ जो अपना टेरिटोरियल एरिया है उसको भी कैप्चर करना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ भी कुछ निर्माण करके अपना कुछ भाग बना सकें। क्योंकि ऑलरेडी जो बनी है वो उनका तो हो ही नहीं रहा है, तो दूसरे नाम से दूसरे जगह पे वो लोग बनाएँगे, शेल कंपनी जो भी कुछ करके जाएँ। तो ये प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे हम राष्ट्र धर्म कर रहे हैं, देश की वो कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, आप सब दुनिया भर का कर लीजिए, लेकिन आपका देश की एक बहुत बड़ी आबादी भूखमरी पे आ जाए, तो निपट गया। जैसे ये पाकिस्तान का आप देख लीजिए, है ना? एक उदाहरण कि वहाँ भी राष्ट्रवाद है, हम नया पाकिस्तान बनाएँगे, एक नया श्रीलंका बनाएँगे, ये बेवकूफ़ी जो चली है, कहाँ गया? आप देख सकते हैं। म्यांमार में तबाही मची हुई है, वेनेजुएला निपट गया फ्री के चक्कर में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? उदाहरण एक ही 2 नहीं है। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, तो जो हम कैसे कवर कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। एक युवा लोग जो आज नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कैसे ओवरकम करें ये महत्वपूर्ण है। तो पहला चीज़ ये है टेक्निकल ट्रेनिंग जितना युवा लोग बेहतर कर सकते हैं जहाँ से भी हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, इंटरनेट का सही यूज़ करके, है ना? वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उस बैंक में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि आपको देख रहे हैं कि एलआईसी और एसबीआई दोनों का डूबने वाला शेयर्स, अगर वो डूब गया तो आपके पूरे पैसे ही सीज़ कर दिए जाएँगे। आप पैसे एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे स्थिति अभी आपका चीन में हुआ है। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को। तो अगर आप बैंक को अगर राष्ट्रीय बैंक को सपोर्ट करते हैं, तब आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं। आपके पास पैसा है, लेकिन आपको पैसा जो है जब्त हो गया रिकवरी के लिए, आप निकाल नहीं सकते। अभी आपका अकाउंट सब मैं जाम कर दूँ और बोलूँगा भाई कि रियान भैया और साथी लोग 5,000 ही निकाल सकते हो और बैठे रहो करोड़ों रुपए लेके, आपको कहीं यूज़ ही नहीं हो सकता। क्योंकि वो पैसे को तो हमको दूसरी चीज़ों में चलाना है, योजनाओं पे। ये तो किसी को तनख्वाह ही नहीं मिलेगा, सरकारी लोगों वो अलग ड्रामेबाज़ी पूरा सड़क पे उतर जाएँगे कि हमारी माँगें पूरी करो, तब कहाँ जाएगा आपका सिस्टम? वहाँ पे भयंकर रूप से उस पॉइंट पे धराशायी होगा। नेक्स्ट चीज़ है, जितने भी जो मध्यम वर्ग है उसमें टैक्सेस में कमी कीजिए और ऑटोमेशन और जो गलत फ़ॉल्स प्रोसेस जो कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ भी गलत है, वहाँ पे जुर्माना बढ़ा दीजिए। टैक्सेस कम, जुर्माना ज़्यादा। तो आदमी क्या करेगा, भैया जो उतना भारी जुर्माना की जगह और घूस उससे ज़्यादा लेंगे, तो बेटर है कि अपना काम ही सही ढंग से कर लो। तो ये जब दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, तो जो बीच में के लोग जो होते हैं ना, ये धीरे-धीरे गलत प्रैक्टिसेस को जो प्रमोट करते हैं, चलता है यार, अरे अपने देश में यही सब घूसखोरी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, गलत सामान बना रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं, उस पे कंट्रोल हो जाएगा, आर्थिक कंट्रोल। तीसरा, ओवर प्राइसिंग, ओवर स्टोरेज, मेल प्रैक्टिसेस ऑफ बिज़नेसेस जितने हैं, वो उस पे रोकेंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, बहुत सी जो जनहितकारी योजनाओं को त्वरित गति से लागू कीजिए। बहुत सारे ऐसी योजनाएँ हैं, जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन सिर्फ़ पॉलिटिकल इस कारण कि भैया ये कांग्रेस आएगी तभी हम लागू करेंगे इनके नाम से। अरे भाजपा आएगी तो हम इनके नाम से फलाने-फलाने पुराने नेता के नाम से करेंगे। तो इस कारण जो जनहितकारी बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं, जो अभी तक के हॉल्ट में रखी हैं, उसको अगर हम लाएँ प्रयोग पे, है ना, ग्राउंड पे लाएँ, तो जो उसका असर पड़ेगा। पाँचवाँ है, जो फ्री का कॉन्सेप्ट के चक्कर में वेनेजुएला और श्रीलंका बर्बाद हुआ है, वो हम देख रहे हैं। तो बेहतर है कि कॉस्ट को हम रिड्यूस करें, ताकि एक आम आदमी आराम से चीज़ों को खरीद सके, एक प्रोसेस को हम डेवलप करें। और मैंने खुद यहाँ के व्यवसायी लोगों में देखा कि यार बाहर के अमेज़न ये वाले लोग सब लूट रहे हैं, अपने रेट लगा रहे हैं। तो भाई आप भी तो वही कर रहे हो, हैं? 10 गुना, 8 गुना चार्जेज़ लगाते, एक छोटा-सा अगर मैं एक एलईडी लाइट लेता हूँ, जो उसका बेस कॉस्ट कहीं मान लो चाइना में ₹3 है, यहाँ दिया था ₹8 हुआ। आप उसको पैसे ₹70 बेच रहे हो यार, ये तो गलत है। आप 30 में बेचो, 25 में बेचिए, तो भी ₹7-8 का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या गलत है? लेकिन आप ₹70 में बेचोगे, तो कौन आदमी लेगा? तो हर कि देखिए क्या है, एक ग्राहक के नज़रिए से हर आदमी क्या है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, शॉर्ट चाहे रखिएगा, मैं शॉर्ट थोड़ा में ही कर शॉर्ट। रहा हूँ। जी, जी। चाहे यहाँ का हो, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो, वो हमेशा क्या है, ऑप्शंस ढूँढता है। तो आप उसको बेहतर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जो हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करता है, भारत में जो सामान है, क्वालिटी वर्क चीज़ें, तो अपने यहाँ के लोग भी उपयोग करेंगे और यहाँ के लोग अगर उपयोग करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी समर्थन उसको मिलेगा उस प्रोडक्ट को, कि हाँ यार, जब भारत में इतने करोड़ उसका यूज़र कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? अगर उसका हम ले लें, तो हम भी फ़ायदा कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना? उसके बाद आता है कि निर्माण और उत्पादन में तो बढ़ोतरी करना ही है। मार्केट रिसर्च और इनोवेशन पे भी सबसे ज़्यादा काम करना है। हम चाइना को गाली देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझने के प्रयास करते कि हमसे बेहतर मार्केट इनोवेशन को और मार्केट स्टडी को करने में चाइना हमसे आगे है। इसीलिए एक कंघी से लेके पिन से लेके सारी चीज़ों को
थोपने में वो महारत हासिल कर लिया। हम कोई भी ऐसी चीज क्यों बोलते हैं लोग कि हम 80% से 90% जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज आइटम का यूज करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इसको सामने वाले की जरूरत क्या है। तो हम अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या है, सुविधाएं देना नहीं पसंद करते हैं और सुविधाएं नाम पे धांधली कर देते हैं। यही कारण है कि हम मार्केट चीजों में बहुत पिछड़ जाते हैं, है ना। वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। हम सब कुछ लेते हैं, गाली भी देते हैं, चीन को सब कुछ करते हैं, अरे उसको ऐसा कर दो उसको, लेकिन घूम फिर के तो वो लेते हैं हम उसी के प्रोडक्ट हैं। तो वो जानता है सामने वाला इसकी जरूरत को पकड़ लो, नफ्स को हर चीज में घुसा दो अपना चीज को, प्रोडक्ट को, और ऐश करो। वो तो देगा ही, पैसा आएगा ही घूम फिर के, वो खुद बना ही नहीं सकता। ये चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन तो बेहतर करना ही है। एमएसएमई और एंटरप्राइज नहीं पॉइंट गोस्वामी और लेना, अगले उसमें ले लेना, ठीक है, बने रहो माइक पे रहो, अगले उस पे ले लेना जी। नकुल, अक्षय या नकुल? अक्षय या नकुल, दो में से किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। मैं 1-2 मिनट के बाद बोलता हूँ, कोई और बोल ले अभी। चलिए प्रदीप जी, प्रदीप जैन। फिर गुरु जी, फिर बेहुदा मेरा टाइम, मेरे लिए यहाँ पे दिन है, आप लोग तो अभी सो जाएंगे, मैं आपके साथ टाइम बिता रहा हूँ ये सोच के कि इससे कोई अपना मसला हो जाए, सबका भला हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो विच इज फाइन। लेकिन फिर वैसे ही आप सब्जेक्ट मैटर में डालो कि आके अपना भड़ास निकालो, तो उससे क्या होगा। आई कैन, अच्छा मेरे से बात बोले आई कैन भाई, होता क्या है, वाकई बहुत जनता बहुत परेशान है। आप तो नहीं, वहाँ लेकिन आराम से बैठे हुए। मुद्दों पे बात, आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपने गांव की चाची के बारे में बात करने लगोगे, तो आपका इलाज कैसा होगा? चलिए, अच्छा, जब भी तो हम आपको माइक में ले रहे थे। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं करूंगा। तो नहीं, क्या हो रहा है कि बात किस टॉपिक पे करें, क्योंकि अभी तो ऐसे हो रहा है कि सब वेस्पा स्कूटर भी चला ली हमने, हवाई जहाज भी चला ली, विक्रांत तो मेरे समझ को मांझी आते हैं 15 मिनट के लिए, और मांझी ने उनका नाम भूल गया अभी, अंजनी आते हैं अपना मुद्दा रख के, ये सब क्योंकि किसी को कोई सीरियस नहीं लग रहा है, सब अपने मुद्दे डालते और भाग जाते, क्योंकि और फिर देखो भाई, दिस हैज टू बी, आई एम नॉट सेइंग कि भाई, लेकिन कंट्रोल स्पेस होना चाहिए ना, कि अगर बोलना है तो ठीक है, तो टॉपिक वैसा होना चाहिए कि भाई आओ अपनी भड़ास उतारो, तो फिर मैं खाली स्पीकर पे सुनूंगा सबकी भड़ास है। लेकिन ये इकोनॉमिक टॉपिक्स है, सबके पेट पे लात पड़ने वाली है, वो मुद्दा छोड़ के फिर कोई डेटा देखो डेटा कैसा है, आपके जन्म कुंडली जैसा है, सबको मालूम है ग्रह कहाँ पे चंद्रमा बैठा है, कहाँ पे वीनस बैठा है, कहाँ पे। अरे भाई, उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए। सिर्फ डेटा देख के आपका कुछ नहीं होगा, डेटा से हल कैसे निकलेगा। तो मेरा प्रॉब्लम है, ज्यादा डेटा भी ना करे। ओवरऑल इकोनॉमिक्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, पहले ये समझ के चले। यहाँ पे जो भी लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अलग होता है। स्टैटिस्टिक्स सारा डेटा कलेक्ट करके आपको पेश करता है, इकोनॉमिस्ट को उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है। अभी फैक्ट फाइंडर भी वो चाइना का बोल के अभी है नहीं फैक्ट फाइंडर, तो जो चाइना इतना निवेश किया इंडियन स्टार्टअप पे, लेकिन उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने नहीं बोले। तो कभी कभी लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे। वो एक मुझे याद है बचपन में एक सीरियल था, ये क्या हो रहा है वैसा मैं परेशान हो गया, मतलब मेरे दिन का टाइम जा रहा है। आप लोग तो अभी खा पी के कोई तो लंच डिनर सब अच्छा करके सो जाएंगे, हमारा तो दिन है। हमको एक्चुअली आई एम शेयरिंग माय प्रोडक्टिव आवर हियर। तो मेरा बोलना है कि भाई एक टॉपिक, चलें, सॉरी, नहीं वो नहीं, रिजवान सॉरी भाई बोले जो भी आपको। मॉडरेटर है उसको स्ट्रिक्टली ये टॉपिक पे रखना है। लोगों को नहीं अच्छा लगे तो म्यूट कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सबको बोलने, देखो इंग्लिश में कहावत है, सॉरी थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, रफ लैंग्वेज है, यू नो, everybody has opinion is like asshole, everybody has one।
बराबर, सबके पास अपने अपने ओपिनियन, लेकिन टॉपिक पे बात करो ना। कल हम बात करेंगे धर्मशास्त्री के ऊपर और परसों बात करेंगे जात पात पे, या तो वो ही टॉपिक ले लो, उस पे भी बात करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ कुछ मतलब नहीं है। अंजनी जी आते हैं, पूरा डाइग्रेस करते, हर बार जात पात का टॉपिक चालू करते। मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ, मैं ब्राह्मण पैदा होके मैंने छोड़ दिया, मैं जनेऊ भी नहीं पहनता, लेकिन वो टॉपिक अलग टाइम के लिए। या तो इसमें ये इकोनॉमिक इश्यूज के साथ वो कैसा जुड़ा हुआ है, अंजनी जी ने समझाना चाहिए। आके बस वही रोते रहते। सीमा जी ने बराबर किया उनको रुका के, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है सब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। अच्छा, आई कैन जी, मैं नकुल बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वापस, आई वांट टू एवरीबॉडी टू कम टू द टॉपिक, एंड द रूट कॉज ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज जॉब्स। एक्चुअली क्या हो गया कि हम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बेनिफिट के लिए पीएसयूज को, नेचुरल रिसोर्सेस को, और व्हाटएवर इंफ्रा वी हैड, सबको लीज पे देना शुरू किया, सबको रेंट पे देना शुरू किया, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू किया, और हम लोग इधर जॉब लूज कर रहे हैं उसके चक्कर में। Again, a diversion topic. The topic is how Adani looted country. तो उसको तो आउट ऑफ फेवर जाके उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिले ही, आउट ऑफ बाउंड जाके उसको अलग अलग सेक्टर्स में उसको जहाँ पे वो Nakul एक्सपोजर Bhai नहीं था। and I can buy and Adnan Bhai, just 1 second, please. Everyone, just give me a break. How are you all doing? Good evening. Rizwan Bhai, Assalamu alaikum, Namaste, Sachin Bhai. I just read a report. I don't know how many of you all have read it about this company called IHC from Abu Dhabi is planning to invest $400 million with Adani Enterprises. I don't know how much truth there is. It's on the Economic Times and India Times, I think, today. Does anybody know about this particular development? Yes, I think on the very first day when this whole call, I said the investment from मिडिल ईस्ट बोला, सब यहाँ पे जो उस दिन से वो जानते हैं, मैंने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ये मैंने फर्स्ट डे से, आप रिकॉर्डिंग होगा सुन लीजिए, मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये बहुत बड़ा गेम है भाई, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, अडानी का इशू 30 दिन या तो 45 दिन तक डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये आते हुए एफपीओ के टाइम पे काफी इसमें हेरा फेरी होने वाली है। तो हाँ, ये सही है। ये कंपनी देखो, मिडिल ईस्ट में बहुत सॉवरेन फंड्स ऑपरेट हो रहे हैं। या तो जो क्या बोलते हैं, वो पूरा पैसा रिसर्कुलेट होके वहां से आ रहा है, वो है। लेकिन एक जेन्युइन फंड्स भी है, जैसे अबू धाबी किंगडम की फंड है। तो और इनके पास बहुत पैसा पड़ा है, कि मैंने ये फंड से पैसे उठाए मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत पहले। तो आई नो इनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, और इन लोग बहुत टाइम तो इनके जो इनके खाली रिलेशनशिप से आपको पैसा मिल जाता है। यानी इन लोग ये ऐसे अरबपति, सही में अरबपति है कि इन कभी कभी तो आप छोटा मोटा फिगर देखते भी नहीं है। 300-400 मिलियन इनके लिए कुछ नहीं है। अबू धाबी वेल्थ फंड के पास फिलहाल मेरे ख्याल से लास्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ 2011 व्हेन आई रेज मनी, दे हैड क्लोज टू 1 ट्रिलियन। तो उनके लिए लूज चेंज है 400 मिलियन खाली मार्केट को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म, यानी मीडियम लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं बोल रहा लॉन्ग टर्म 2 साल के बाद, मैं बोल रहा 4-6 हफ्ते दे दो, रियल डायरेक्शन मिलेगा। अडानी 9 नंबर से आउट ऑफ फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट भी जा सकता है, और ये मजाक नहीं है, सीरियस है। क्योंकि उतना लॉन्ग उसको कोई बेल आउट नहीं करेगा। लेकिन अभी बेल आउट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई श्योरिटी रखी होगी, क्योंकि पहले दिन से ये बात हो रही है कि अडानी की कंपनी की, मोदी की। तो अगर ये मोदी की है तो मोदी तो पूरे देश को दाव पे लगा सकता है ये कंपनी में पैसा लगाने के लिए। एंड ही हैज ऑल द अपैरेटस, ही हैज ऑल द स्टेट अपैरेटस टू यूज। बोल सकता है कि भाई इंडिया के मार्केट्स में फ्री एक्सेस दोगे, या तो इंडिया के मिनरल राइट्स ट्रांसफर कर देंगे जो भी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट चाहता है, या तो ट्रेड डील में। तो देखो, गवर्नमेंट में होने का सबसे बड़ा फायदा, और ये ब्रूट मेजोरिटी के साथ, कि आप कुछ भी कर सकते हो। मोदी अडानी को बेल आउट करना, लेकिन कितने टाइम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में करेगा इंडिया में, फिर हवा, अभी इलेक्शन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं इंडिया में कौन से स्टेट में, तब तक करेगा। उसके बाद अबू धाबी वाले बोले कि भाई हमने तो शॉर्ट टर्म टिकट, जैसे बहुत प्रोड्यूसर लोग एक जमाने में करते थे, खुद ही टिकट खरीद के। I can buy, but my point of content was
Typically, how much does this $400 million boil down to? And will it actually, see, we are talking about the stock market wherein there is a zillion players on it. And typically, everybody in the world knows it works on a market sentiment. When the sentiments go bad, obviously, there is going to be a sellout from every nook and corner. And when this happens, do these $400 million typically, is it going to really impact? Because he's talking about only Adani Enterprises, not the other stocks. Of course, they will siphon out funds from this company to that company. They do all that stuff. So, will this $400 million really, take him to like, let's say it's a staircase. You have to reach from ground floor to first floor. So from ground floor to where can this particular $400 million take him? And for Abu Dhabi, as you said, if that's a loss, they'll just write it off. They don't give a damn. So, No, yeah. so No, till where can it take them? No, see, that's what did I first say was it's a short term. They are trying to let this, because this has been Modi's strategy. Let's issues die down, natural death. What commitments against this 400 fine? It's a small, really chump change, but against that, what commitments or what? I'm openly saying Modi government, because I know, because if their party is raising this issue of nationalism, obviously they have vested interest in bailing this whole issue out. So 400 may not, but see, look at the volumes today. I was just looking, it is funny at that volumes that stock is going 6%. The advantage with this whole Adani scam is, or enterprises, it's the free float is so low that 400 is a lot of money. 400 million is a lot of money for that, whatever is away. So it to create no perception, it's enough. To bail that's why I said after 6 weeks or 8 weeks we'll realize Adani is not even in Forbes billionaire list. But they are going to, I don't know if there is any election coming up in next month or two. I have not kept track of that. If that is the case, till that election is going to next month. Only Tripura, only one state? Yeah. Karnataka in April. Yeah. There are five major elections this year, sir. No, this year no. I'm talking of next 1 to 2 months कितने इलेक्शन है उस पे पूरा निर्धारित करता है. 3 है. और इसमें कोई बड़ा स्टेट है? कर्नाटका है ना. सब छोटे-छोटे स्टेट है. कर्नाटका बड़ा है भाई, छोटा कौन बोल रहा है? कर्नाटका भले ही 26 एमपी देता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन साउथ के उनका साउथ का गेटवे है. तो शायद एक कर्नाटका इलेक्शन तक ये 400 मिलियन इधर से, 400 मिलियन सऊदीया से, 400 मिलियन कटारी फंड यहाँ से, 1-2 बिलियन चांसेस है ये घूमते रहेगा. मैं अगर इलेक्शन इतने करीब है, अगर 8 वीक के अंदर है, ये भाई साहब तब तक मैनेज कर लेंगे, ये लिख लेना. उसके इसलिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये रोज रिएक्ट मत करो इस पे, किसी का फायदा नहीं है. बस खून जला रहे हो और अपने होप्स बढ़ा रहे हो और गवा रहे हो, 2 में से एक होगा. और मैंने पहले दिन ही बोला था सऊदीया, इसके बाद मलेशिया का भी फंड आने वाला है, लिख लो. तो इनके सब जो मेटाएग सब फंड्स है सब आएंगे, लेकिन ये फंड को शायद अडानी से फायदा नहीं होगा, लेकिन कोई कोलैटरल होगा, तो मुझे नहीं मालूम, आई कैन नॉट क्लेम टू नो दैट. लेकिन बिना 400 मिलियन कोई गवाना नहीं चाहता, उसके सामने पाउंड ऑफ फ्लेश तो ले ही रहेगा, लेकिन किस हिसाब से लेंगे वो मैं नहीं जानता अभी फिलहाल. दैट्स व्हाई बजट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, वेयर वी कैन सी एलोकेशंस कहाँ पे ड्रॉप किए, तो वो फंड कैसा कहाँ जाने वाला है.